Hey, what's up, guys? Welcome to Chalchitra Talks. Hi. Sorry for the delay. बहुत Hi. सारा मेकअप कर रहे थे and सारे हम अपनी arrangements कर रहे थे पूरी. Again, all of you hear us. Hi, Disha. Hi, Vaani. Hi, Hi. Hindol. Hi. Yeah. Hello. It's just embarrassing, despite the makeup, we show up like this. Yeah. It Guys, the जल्दी से. makeup is for Yeah, the inside, it's not for the outside. yeah. Yeah. So, गाइस जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो और आज नया रिकॉर्ड लाइक हिट करेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे. किसी का कमेंट आया था कि 1 घंटे का बेयर का डिस्कशन चाहिए. सो गाइस फॉर द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम वील रेफर टू ईच अदर बाय शेफ. यस शेफ. ठीक है. Yes, chef. यस शेफ. Okay, sure. है ना. Is this So, going to be a spoiler-free discussion? Because मैंने Yeah. आज first episode देखा है. I've Oh. yeah, me too. I Of- haven't seen the best Second season. and I हाँ. plan to watch it sometime soon in the future. But I really Yeah. want to watch it because I loved the first seain. So I want a spoiler-free discussion, and I Yeah. hope this ठीक है. won't be. Yeah. हाँ. I hope Spoiler this बस भाई won't ये be. कारनी मर जाता है बस और कुछ नहीं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. या सो परफेक्ट टाइमिंग. और कुछ लोगों के ए कुणाल्स एपिसोड वाज रियली गुड. थैंक यू सो मच अंकित. कुणाल कीमू के साथ हमने एक एपिसोड किया था. प्लीज कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है. कोई ऐसे नए लोग हैं जो चैट में पहली बार आए हैं लाइक ये लोग कौन है लाइक हो सकता है आप लोगों ने हमें कुणाल कीमू एपिसोड के थ्रू डिस्कवर किया हो. सो डू टेल अस. और दैट एपिसोड इज डूइंग रियली वेल एंड आई थिंक इट विल इंशाल्लाह क्रॉस बिग नंबर वेरी वेरी सुन. आज 60,000 व्यूज हो गए हैं उस पे. एंड देयर इज अ कमेंट फॉर वानी आफ्टर सो लॉन्ग. एंड या Yay. Vani did a solo stream on like Kitabi Cabins also. So Vani is I think also planning to do a solo stream this Sunday. And yeah, Deval is asking कौन है आप लोग. ये शायद हमारे like You कुणाल are खेमू a एपिसोड. good question. और आज हमें एक बहुत अच्छा शाउट आउट भी देना है गाइस. हम एक कप यूज कर रहे हैं चारों. एक बार से चारों अपना कप दिखाइए गाइस. दिखाओ कैमरे के पास लाइए. यस, ये मेड ऑन अर्थ, मेड ऑफ अर्थ MAE करके एक बहुत प्यारी कंपनी है. इट्स अ कप ऑफ दैट. और हम इसके बारे में बहुत बढ़िया बात करेंगे कुछ टाइम में. एक आई डिस्कवर्ड देम इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड आई विल टेल यू गाइस द स्टोरी. मैं बस वो चैट ढूंढ रहा हूँ एक जहाँ पे लिंक को, अगर लाइक हमारी टीम ये देख रही है तो प्लीज इनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए. मेड ऑफ अर्थ है कंपनी का नाम. एंड या ग्रेट कप्स. सो बेस्ट ऑफ जून चालू करते हैं. दिशा गायब हो गई है. परफेक्ट टाइमिंग गाइस. 90 लोग देख रहे हैं. एंड वील स्टार्ट एंड डिशफिश जॉइन. डिशफिश इज हियर. ठीक है. Sorry. Yes. हाँ स्पॉन्सर मिल गया है गाइस. हमें बहुत बड़ा स्पॉन्सर मिल गया है. तो थैंक यू But सो the मच real आशीष. sponsorship that we want is you. And आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं, you can buy a yearly membership at chalchitratalks.com. तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हमारे गॉडफादर्स. तो wherever do you want to tell people about Yeah. it? हम बताएंगे आपको ईयरली मेंबरशिप के बारे में भी. अभी माहौल बनाते हैं. और लाइक आज एक किसी ने एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर है who joined our community. I am a big fan of hers and she also became a part of Chalchitra Book Club today. So yeah, we are going to talk about the memberships and the sponsors. But सबसे पहले सब एक एक recommendation देते हैं of the best things they watched, ate, saw, consumed in the month of June. Why don't we start with Hindol? Okay, so I will leave the obvious recommendation to you because I know you will talk about it. मैं आदिपुरुष. हाँ नहीं ना उससे रिलेटेड है and वो भी है बेस्ट recommendation. ऑफ जून में आदिपुरुष प्लीज हाँ, डाल दीजिए प्रोड्यूसर अगर वो देख रहे हैं. हाँ वो वर्स्ट ऑफ जून में जाएगा. But हाँ, no, I Yeah. was talking about the show that you are going to talk about. But I followed Vaani's recommendation this month, and दो recommendation मैंने follow की वानी की. मुझे दोनों काफी सही लगी. One is a movie that she recommended on Second Last Supper, तो उस पे हमारा काफी अच्छा एपिसोड है on Eternal Sunshine of the Spotless Mind. तो मैंने पहली बार देखी, फिर मुझे काफी सही लगी. तुमने Thoroughly. पहली बार देखी इटर्नल सनशाइन? हाँ. तो या thoroughly enjoyed, great movie. दोनों हाफ अच्छे थे उसके. आज तक क्यों नहीं देखी थी? मेरा थोड़ा रह गया था. Like I was not very like averse to that genre. तो मैं अभी recently मैंने देखना स्टार्ट किया. Like 500 Days of Summer I think मैंने last year देखी थी. तो अभी मैं like I'm discovering all these movies. How would you call the what would you call the genre of Eternal Sunshine? Comments में भी बताइए. दिशा, वानी, क्या genre क्या होगा Eternal Sunshine? I think
फैंटेसी बोलना सही रहेगा, लाइक दैट्स Yeah. व्हाट आई वुड अज्यूम. Science एंड fantasy. हाँ, I वो think the genre हाँ, It's called I sort of science fiction. या सूडो साइंस फाइंड, उसमें कोई रियल साइंस नहीं है, वो इट जस्ट फील्स रियल, दैट्स इट. I think the genre would be बंदे का कट गया. हाँ. So no Yeah. no, like yeah, हाँ. Gajni could be a genre also. I don't know what. Yeah, Gajni was way more emotional than Eternal. Yeah, तो वानी छोड़ के चली Vaani गई. left the chat. Vaani left the chat. यार इतने अच्छी फिल्म रेकमेंड की, ऊपर से ये बोल रहे नहीं, बट दैट वाज रियली नाइस. द सेकंड रिकमेंडेशन जो वानी ने मुझे दी थी, इट्स अ बुक रिकमेंडेशन. ये मैंने लाइक आई थिंक 2023 में मेरी पहली किताब है, तो लाइक आई थिंक बड़ी बात है मेरे लिए. तो वो है, सो दिस इज द बुक. इट्स बाय मंटो Oh, एंड nice. इट्स कॉल्ड स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई. तो अगर आपने जुबली देखी है, दिस इज द आर रेटेड वर्जन ऑफ जुबली. दिस इज माय पिच टू एवरीवन. तो ये मतलब इट्स अबाउट ये, दिस इज द मिस मालिनी साइड ऑफ मंटो, कि वो पूरा एकदम गॉसिप मोड में आ जाता है. ही टॉक्स Yeah. अबाउट लाइक ऑल बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह. तो काफी इंटरेस्टिंग किताब. सो ये भी वानी ने रेकमेंड की थी. सो या, these Nice. this is how I start my best of June. Nice. What about you, Disha? So मेरे यहाँ पे अभी my mom decided now is the best time to come and cook. So there might be a lot of disturbance in the background. So I think like is this fine अभी? Yeah, अभी कोई I can दिक्कत talk? नहीं आ रही. Okay. Yeah. So the thing that I enjoyed the most this month was Modern Love Chennai. मैंने बहुत टाइम Nice. बाद एक पूरा शो देखा, and मैंने बहुत तमीज से देखा. I didn't binge watch it. I watched one episode every night and I thoroughly enjoyed it. Hmm. Apparently कितने episodes हैं? उसमें कोई तो एपिसोड है which is similar to like Eternal Sunshine, ऐसा सुना Yeah, मैंने. the last one. Yeah, हाँ. yeah. तो So वो Modern देखना Love है. के कितने आ गए? There is Mumbai, there is Chennai. What else There's is there? There is Hyderabad. Hyderabad also. Yeah. Yeah. So Mumbai, honestly, I did not enjoy so much. Like I haven't watched the whole thing, but I just couldn't get into it. But with Chennai, the first episode itself was so nice. And the thing is, ki with Modern Love, I had expected it to be really dark and अच्छी feeling नहीं आएगी. But most of the episodes were much lighter. So it was a really feel good watch as well, which was very surprising. The last episode is Eternal Sunshine, तो वो थोड़ा dark है, but it was अच्छा. lovely. Yeah. Nice. Got it. And वानी को मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ. वानी का इंटरनेट इशू हो रहा है. We can't see her, so we'll add her when she's here. Likes कितने हो गए तुम लोगों के पास? YouTube access है क्या? I don't have YouTube with me right now. Everything is There on are mobile. 42 likes. is And what- 113 people watching, guys. 100 लाइक करो. 100 लाइक करोगे तो इस स्ट्रीम में वानी आपको बुक का मंथ भी बताएंगे, क्योंकि आज महीना खत्म हो रहा है. नेक्स्ट मंथ कौन सी बुक पिक कर रहे हैं हम आपको बताएंगे. 3 सरप्राइजेस देंगे हम आपको. हम बेयर की बात करेंगे, हम बुक का मंथ की बात करेंगे, हम आपको बुक रिवील करेंगे. एंड Hindol अगर बहुत सारे लाइक्स हो गए, मतलब 200 300 500 लाइक्स हो गए, तो वील टेल यू ऑल द गेस्ट एपिसोड्स जो अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग शूट करने वाले हैं. yes, we have take note. 7 guest episodes lined Yeah. up. 7 guest episodes lined up from 3rd to 10th July. And आपको सब उसमें एक एपिसोड ऐसा है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि वो होने वाला एपिसोड, बट वो हो रहा है. जो मैंने अभी जिसका स्नैपशॉट भेजा था. नहीं वो नहीं, वो इनिशियल हमारे लाइनअप में ही है. तो तुम किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, let's see. तो बताना गाइस, अभी बहुत शानदार हमारा लाइनअप है. एंड let's I will also give some recommendations. I just wish Vaani comes and like मैं आपको थोड़ी recommendation देता हूँ. सबसे पहली recommendation, बिस्वा कल्याण रथ का स्पेशल जाके देखिए. मूड खराब Amazon प्राइम पे उनका स्पेशल आया है. इट्स रियली गुड. जो लास्ट के 10 मिनट है मूड खराब के, ओ हो हर बॉल पे छक्का मारा है बिस्वा कल्याण रथ ने. मैंने उनको मैसेज भी किया था देखने के बाद. और लाइक इट्स वेरी अमेजिंग. लाइक वो बेसिकली लाइक टीवी ले आते हैं और वो एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए. एंड द गाय इज अ जीनियस. सो यू नीड टू चेक इट आउट. क्योंकि अभी मैंने राहुल सुब्रमण्यन का भी देखा था. उसका क्या नाम था? हिंडोल? कल नहीं, वो तो पुराना वाला था. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनके नए वाले का. हाँ. जहाँ पे जिसमें बंदर वाली कहानी थी. हाँ, द क्राउड वर्क स्पेशल, क्राउड वर्क वाला जो उनका था. बट लाइक द बिस्वा कल्याण रथ, हाँ, Vaani is back. Yes, Vaani, we can see you. Vaani, it's okay. Yes. Relax. Take a Yeah. deep breath. It's okay. Yeah. So हम सब एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं. एंड आई वाज रिकमेंडिंग मूड खराब. अगर किसी का भी मूड खराब है तो आप जाके मूड खराब ऑन Amazon प्राइम देखिए. बिस्वा कल्याण रथ का ये स्पेशल है. 130 लोग देख रहे हैं.
जैसे ही हमारे स्ट्रीम पे 275 लाइक्स होंगे, हम पहले 3 गेस्ट रिवील करेंगे। बहुत बड़े नाम है गाइस, फील आ जाएगी आपको। Yeah. ठीक है, और दैट इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। आई विल गिव वन मोर रिकमेंडेशन। Spider-Man Across the Spider-Verse or Spider-Man Oh. Across the Spider-Verse. Have you all seen it? Disha, Vaani? No, I've seen it. I haven't watched it. I had done a live stream on Sahil Shah's channel जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट के 10 मिनट एक सेगमेंट किया था, where I had said this line. पिछले 5 साल के इतिहास में मेरे को 2 बार ऐसा लगा है कि जब मैंने कुछ देखा हो एंड आई सेड कि आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस. फर्स्ट टाइम it happened in 2017 when I had seen Into the Spider-Verse and I was like ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं है, मेरे को लगता नहीं मैं ऐसा कुछ कभी देखने वाला हूँ. और लाइफ में सेकंड टाइम ये तब हुआ जब मैंने इसका सीक्वल देखा अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, व्हिच इज लाइक आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस. हर चीज परफेक्ट है उसकी. एनिमेशन, राइटिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट. दे हैव बेसिकली डिस्ट्रॉयड द पिक्सार ट्रोप. पिक्सार का एक ट्रोप है कि ऐसे थोड़े फ्लफी से कैरेक्टर्स ले आओ और इमोशनल सी कहानी बना दो, ये सैड है, ये हैप्पी है. सो किसी को किसी दिन आके ना पूरा डिस्टर्ब करना था एनिमेशन, और द वे सोनी इज डूइंग इट. सोनी का भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस है, ये क्या नाम है उसका? सोनी एनिमेशंस, राइट? Sony Pictures Animation. सोनी पिक्चर्स एनिमेशन. ये लोग अलग लेवल गेम खेल रहे हैं. दे डिस्टरप्टेड हाउ स्पाइडरमैन स्टोरी आल्सो फंडामेंटली वर्क्स. सो do you guys have any thoughts about like Across the Spider-Verse? Vaani, Hindol? Yeah. Yeah, Hindol, do please you want to tell go us. first? Vaani, आप बताओ, आपने कुछ नहीं Yeah. बोला. Did you guys read that post? I think they have different versions of the movies in different Yes. cinema. So Yes. yeah, and that was now I want to watch it again and see if I can see the See, same. I think Yeah. it's a marketing gimmick क्योंकि इतना टाइम उनके पास है नहीं कि वो लोग पूरा बैठ के मेरे को अलग-अलग बनाएंगे. Yeah, I वो still लोग want to watch it. Like I can watch the movie at least a few more times. I loved it. And मेरा बहुत कम होता है where I'm like I patiently sit and watch something on screen. Otherwise, as I'm infamous for, मैं बहुत fast forward करके चीजें देखती हूँ. But that was the first time जब मैं इतनी शिद्दत शराफत से I was like this, and I remember there's this scene. I don't remember the exact scene, but my mouth was open and I had to be like, oh. And that was I think one of the few times that Yeah. happens to me. And it's just so vivid, the animation, that you man. eventually just get engrossed. And there were because unfortunately I live in Punjab, or maybe fortunately there are a lot of people who are like, तुम cartoons क्यों देखने जा रहे हो? ये I'm like, सबसे बड़ा this is प्रॉब्लम so है. annoying. Yeah. I love Yeah. cartoons, A, and B, this is not cartoon, Yeah. but I still love it anyway. A lot of people didn't watch Across the Spider-Verse क्योंकि उनको लगा स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड होना चाहिए उसमें. And I was like, Yeah. यार एक कहानी के अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है. तुम ही तो तमाशा Oh, कोट yeah. करते रहते हो पूरे टाइम और फिर तुम ही नहीं देख रहे हो पिक्चर. Yeah. तो how does that work? तो yeah. Yeah. And the animations भी उन्होंने जैसे disrupt की है, like जो Yeah. Gwen की जो अपने father के साथ scene है, like you can literally see every frame change depending Right. on the mood of the. And I was like, और मैं अकेले देखने गया था ये, क्योंकि मेरे को Yeah. था I don't trust any friend जो इसको उस लेवल पे रिस्पेक्ट दे पाएगा जो वो देना चाहता हूँ. और वो भी मैंने ऐसे लाइक सेंट्रल ऐसे कैसे पूरा चूज करके देखी थी सीट जहाँ मैं बैठा था थिएटर में. And I just like it blew my mind, yeah. Like, Yeah. there is so much to like. We can do like a 5 hour stream on Across the Yeah. Spider-Verse. I'm assuming. And every universe is so different. Yes. And yeah, like you said, Gwen ke case mein, like the emotions kind of like the background changes. Yeah. And I love that thing about her universe. Yeah. Yeah. And then she comes Oh, to our universe, which is very basic. yeah. Phoenix is saying Zomato in Spider-Verse was the best Oh brand yes, placement. yeah. Amazing stuff. So मेरे को लग रहा था ये इंडिया जब दिखाएंगे तो थोड़ा सा like they'll shut the bed or something. But I think they did India right. थोड़ा सा वेस्टर्न लाइक लेंस के थ्रू दिखाया है, चाय टी चाय वो वगैरह. थोड़ा like I think NRIs will really like it, Yeah. but हाँ. actual like Indian But Indians will not yeah, like but like मेरे को ऐसे still खटका नहीं. मतलब Yeah. like the way they showed like Mumbai and everything ना, like it was like a really really मैंने जिस थिएटर मतलब मैं बॉम्बे में देखा था तो वहां पे थोड़ा सा मतलब ऑडियंस में वो हो रहा था, ये सब स्टार्ट हो गया था जब वो इंडिया वाला सेक्शन चल रहा था. तो मतलब yeah. आई सॉ वेरी डिफरेंट लाइक रिएक्शन टू दैट पार्ट.
विनायक भाई लोड ले गए. They should did shit the bed a little, but okay. ठीक है Vina यार, टट्टी करना Nice. अच्छी बात है. Vinayak is basically our editor who like made and shot like the solid Kunal Khemu episode. So yeah, guys, uh, इनको issues हैं across the Spider-Verse से. So I will have some issues tomorrow with him. And there is a super chat for Vani. Uh, Devraj Singh, Vani, when mornings be back. Heart to all of you, by the way. When is the next I think live I'm stream? doing it on Sunday morning. If not morning, afternoon for sure. But Sunday will happen before the Yeah. F1 race also. Great. Guys, कितने like हो गए Hindol? How many likes are we on? एक सेकेंड, हम हैं 102 लाइक्स पर. हमें 275 likes चाहिए and we'll reveal 3 names to you. हाँ, और ये मेरी 2 recommendation हो गई. Vani, which recommendation do you have from the month of June? I अभी read सब एक ही दे रहे हैं. Yeah. So I kind of went back to a lot of books, Yeah. but I discovered this book which is called The Architecture of Happiness. इसके बारे में मैंने किताबी cabins पे भी बात करी थी. This is by Ellen de Botton again, and in very basic terms, he tells you how happiness is associated with the buildings around us, with everything that involves architecture, from the shape of a chair to the color that's used in your neighborhood wali building. And I'll just read out one of my favorite quotes and be done with this recommendation. It says, oh wait, sorry. Those who have made architecture, wait, I'm so sorry. We can feel anxious and envious even though the floor we're standing on has been improved from a remote quarry and finely sculpted window frames have been painting a soothed gray. So basically, he talks about, I know thoda sa boring ho raha hai, but it basically talks about how concrete also has a life of Hmm. its own and everything. So I would recommend this to everyone who's looking just to find happiness in the most basic things in life. लवली. एलिन बॉटन भाई हम सबके वो टीचर हैं जो कभी स्कूल में नहीं मिले. एंड इनकी हम बहुत बात करते हैं चैनल पे. एंड लाइक इफ या दिस इज वन पर्सन एज चलचित्र टॉक्स वी रिकमेंड टू एवरीवन. And you should Yeah. definitely I had a check him out. little mindfuck moment because, sorry, but I had a little mindfuck moment while reading this book because that was because sometimes, you make buildings and there are certain buildings which don't have any color. They're just हाँ. concrete, all of it. And he explains how beautifully, if you look at the concrete buildings, the light will reflect. And had it been a colored building, you wouldn't have seen it the same way. Sorry. No, it was That was very mean. That was very mean, that. especially No, on आपने the. mindfuck बोला. The moment you said mindfuck, I'm like कि gasp वाला वाला reaction Yeah. ढूंढ के रख लेते हैं. Oh, I couldn't find a better word. But like I was like, oh my god, like and then I started appreciating a lot of concrete buildings, just so to say, which is yeah. There is a comment, Shubham ka, why is Disha so quiet today? Disha, would you like to address it? Yeah. This is why. Can you hear it? No, Is it? that's the You point. can't hear it. No. Oh, तो मैं फालतू में ऐसे म्यूट करके बैठी हूँ because my mom is cooking in the kitchen which is right next to me. आज मैं पता नहीं क्यों हॉल में बैठी हूँ and मुझे डर लग रहा है कि the audio from that is going to एक नहीं आ रहा मतलब दिशा. केस में आ रहा है तो There इसलिए is All मैं good. म्यूट करके बैठी हूँ. all That's good. why You like go it. yeah, you can hear everything. Yeah. Yeah. You can't hear everything. Yeah. We Yeah, we can just can't hear hear you. everything. Yeah. say no to yes. Okay. Okay. Yeah. Disha, would you want to recommend something? I already recommended Modern Love, but if you want me to add something, Yeah. so there is this series that used to come on, I think ABP News, काफी सालों पहले called Pradhan Mantri. Hmm. And have you watched it? Yeah, I have. काफी And सही से. Like it's a crash course in Indian history post like modern 1947. history. Yeah. Yeah, Hmm. and it starts from like the integration of the princely states. वहाँ से I think 2013 या 2014 तक पूरा वो trace करती है. Yeah. And Shekhar Kapoor narrates it. Yeah. And अचानक से recommend हुआ YouTube पे and I started watching it and it's so interesting. And I think the best part is I think मैंने ये देखा था बचपन में तो अभी वो बहुत अच्छी feeling आ रही है. And I usually struggle to watch something in the hall क्योंकि parents आते जाते रहते हैं. So there are a lot of things that I cannot watch.
So I feel like Pradhan Mantri is a safe show that Yeah. wouldn't cause any problems, and everyone enjoys it. So yeah, that I've been really enjoying it. I don't know how I'll accurate it note it is, down. but I also it's very comforting because Where बचपन Yeah. can से we watch it? Where can we It's watch it? on YouTube it's for on free. YouTube. Yeah, the whole Yeah. thing. Is it on the ABP channel or where Yeah. is it? Yeah. Yeah. I think Got so. it. Yeah, even if you just put Pradhan Mantri TV series, आ जाएगा. Yeah. Great. एंड इसके साथ लाइक आई वुड रेकमेंड लाइक ऐसे डबल बिल एक और शो है. इट्स कॉल्ड संविधान. तो दिस इज अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन एंड श्याम बेनेगल हैज मेड दिस शो फॉर राज्यसभा टीवी. तो उस पे आता था एंड ऑल ऑफ द एंटायर शो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो आप पूरा देख सकते हो. तो उसमें द डिबेट्स दैट हैपेंड इन द असेंबली लाइक एक एक लॉ पे एक एक मेन चीज पे जो जो डिबेट्स हुई थी सब उन्होंने रिक्रिएट किए. तो काफी सही शो एंड इट हैज लाइक a very good cast. नीरज कभी plays Gandhi in it. वो काफी सही शो है. तो प्रधानमंत्री एंड संविधान यू शुड वॉच टुगेदर. Lovely, lovely. Can I give a recommendation now? मैं अब like the bear की बात करना चाहता हूँ. थोड़ा सा emotional है ये मेरे लिए, so just bear with it. Um, I won't give any spoilers, but like मैंने ये पहले भी कहा था कि जब मैं सीजन 1 जब मैंने देखा था द बेयर का, तो मेरे को ऐसा लगा था कि दिस इज हाउ वी आर रनिंग चलचित्र टॉक्स. एंड व्हेन आई सॉ सीजन 2 इज मच मोर अबाउट द इंडिविजुअल्स देन द मेन कैरेक्टर. सो आप सबकी देखते हो कि लाइफ में कौन कहाँ चल रहा है. लाइक अगर कोई डेजर्ट्स का जो स्पेशलिस्ट है, वो हाउ डज ही वांट टू गेट द एक्सपर्टीज इन हिज फील्ड. एंड शुगर को अपनी लाइफ में क्या करना है, उसके कजन को क्या करना है. And you see, there is a thing that Pixar does. There is a book called Creativity Incorporated. वहाँ लिखा था कि जब भी कोई पिक्सार में बंदा फिल्म बनाने जा रहा होता है ना, उसे बोला जाता है आप एक इंस्पिरेशन लाइक जर्नी पे जाओ. लाइक एक रिसर्च आपके एक इंस्पिरेशन ट्रिप कराएंगे हम. अगर आपको एक ऐसी पिक्चर बनानी है जहाँ पे आप मेक्सिको दिखा रहे हो, तो हम आपको मेक्सिको भेजेंगे, रहो वहाँ पे, चिल करो. बेयर में सीजन 2 में से बहुत सारे मोमेंट्स है वेयर दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. सो सबके पास बहुत टाइम होता है. सो सब अपनी इंस्पिरेशन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, और आप देखते हो हाउ माइन्यूटली दे आर स्टडिंग हाउ फूड इज मेड, और दे आर गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटर्स. बेयर सीजन 2 में एक ऐसा कैमियो आया था, मैं उसको देख के लेजिट 30 मिनट तक रोया था. She comes towards the end of an episode, and I Hindol, like you know, ठीक है मेरे करो. मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे because I was दैट like, इज माय फेवरेट एपिसोड. मतलब एपिसोड 6 भी है बट 7 but इज माय episode फेवरेट. I was like, तुम इसको ले आए यार, मतलब like क्या मजाक कर रहे हो. And she has a very good like speech on why she does it, what gives her the inspiration to do it. And you see a lot of people talk about in the show why they are doing what they are doing. And it's very very this show is very anxiety inducing also. It's structured that ways, but if you can move beyond that and go past it, storytelling level पे the bear works a lot. It has also maybe the most anxiety inducing episode of all time. It's season 2 episode 6. वो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कुछ लोग दिवाली पे अपने घर क्यों नहीं जाते जब पेरेंट्स बुलाते हैं, कुछ लोग क्रिसमस पे अपने घर क्यों नहीं जाते हैं सालों बाद जब उनके पेरेंट्स बुलाते हैं. Yeah. You will understand what anxiety is. Basically उन्होंने सक्सेशन के like वो family dynamics देखे and they were like hold my fork, we'll make something better. ऐसे वो And है ना जो कपूर एंड सन्स वाला जो प्लम्बर्स वाला सीन है जो सब शेयर वगैरह करते हैं. इट्स दैट सीन रेज टू 11. वो पूरा एपिसोड वही है लाइक एंड टू एंड वैसे ही है. सो yeah. And मेरे को एक बहुत मन था, मैं विनायक और सौरभ को भी कह रहा था, आई जस्ट वांटेड टू बी अ टीम एक्टिविटी दैट एवरीवन हु वर्क्स इन चलचित्र watches some episodes of The Bear together, especially season 2 episode 7. There are some quotes in it where you see the team bonding with each other. Like जो मेन हमारे जो शेफ होते हैं उनके साथ जो एक लेडी होती है वो बोलती है मेरे को भी बहुत बड़ा शेफ बनना है, मेरे को इतने स्टार्स चाहिए. And then he tells her that it means you'll have to care about everything. You will have to care about everything. ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जब when you realize कि even if at a larger scheme of things they are not going after something very big, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है. तो वहां पे वो प्रिसिजन को लेके कितने पर्टिकुलर है. एंड आई थिंक बीइंग अ शेफ इज लॉट अबाउट प्रिसिजन.
कि अगर आप अपनी डेस्क से यहाँ तक जा रहे हो, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जा रहे हो, कितने सेकंड लगेंगे, आप लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, जब बाहर एक गंदे टाइप के लोग आए हुए हैं जो खाना लेने आए हैं, आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, बाथरूम में अगर फ्लश नहीं चल रहा, आप रेस्टोरेंट में हो, इन्होंने सारी ये प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, एवरी conceivable problem which can come in Bear season 2, and it just like made me feel much more closer to what I am doing in life. And I had not talked about the Bear for a long time with anyone, because I was like, when I speak about it for the first time, it should be on Chalchitra, and I had been like किसी के साथ भी मैं discussion नहीं कर रहा था, but it's very personal, and I would request all three of you also. Hindol has already seen it, Vaani and Yeah. Disha. I know it's very insight inducing, but like it's when you'll come out of it, I think you will change as a person to some Yeah. level in terms of like focus and like what you want to do in life. Yeah, I'm Yeah. very glad that the episodes are shorter because आज मैंने first episode देखा second season का, and I realized the whole time I was just holding my breath. After the episode was over, I was like, Yeah. नहीं, some episodes are longer. You will see them. अभी आ oh, रहे Yeah, and yeah, some episodes are longer, or just season 2 takes a while to get in the groove. So एक दो episode रुक जाओ, it will take a while, and then और यार जेरेमी एलन वाइट जो है, एक तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं, मतलब लाइक ही इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन आल्सो, एंड ही हैज दिस कैंडल रॉय एनर्जी टू इट, लाइक दैट लाइक मेक्स हिम वेरी वेरी स्पेशल, Yeah. एंड And I yeah. really like his girlfriend also, Claire, जिसने play किया, वो बहुत बढ़िया actress है, जो भी है. Like I really like her character. Do you know how much people are shitting on her character I ki don't give she, a shit. I don't give a हाँ, no, shit. but like, do I you know love like her. do you know how on Reddit people are saying she is the weakest written character in the show, but I don't agree with it either. हाँ. हाँ, हाँ. तो तुम्हारे लिए अलग से मैं महाभारत भिजवाता हूँ, पढ़ लो, उसमें सारे बढ़िया कैरेक्टर आर्क मिलेंगे तुमको. एक अच्छी कैरेक्टर है यार, मतलब आई वाज लाइक कि यार, लाइक यू कनेक्ट सो मच विद कार्मी कि उसकी लाइफ में लाइक नथिंग इज गोइंग राइट, एंड देन देयर इज दिस वन पर्सन हु इज लाइक द परफेक्ट फिट फॉर हिम, कि आई वाज लाइक सो हैप्पी कि चलो लाइक इसको बढ़िया हो गया इसके Guys, साथ. या is it a spoiler? I don't know. Yeah, also I'm very also afraid to one be. last pointer, बेयर जिस भी इंसान को सोशल एंजाइटी है ना, लाइक गोइंग टू पार्टीज, टॉकिंग टू पीपल, उन लोगों को मतलब द वे दे हैव डिपिक्टेड सोशल एंजाइटी इन दिस Yeah. शो ना, because Karmi attends the first party of his life in season 2, where Yeah. like a girl asks him, have you ever been to a party, when was the last time you were in a party, and he's like, never. And you see how awkward these people are outside of work, because they don't have a life outside of work, and that is what they have chosen. उनको जैसी थोड़ी हो जाती है, अब क्या करें, वो वापस काम करना चालू कर देते हैं. Yeah. So the way they depict it is beautiful, and yeah, like Kendall, I think you want to say something. Kendall is stuck हम for me. मेरा वही, मुझे एपिसोड 7 के बारे में बात करनी है. मैं कोशिश करूंगा लाइक विदाउट या स्पॉयलर्स. हाँ, मतलब आप थोड़ा स्पॉइलर हाँ टेरिटरी में जा रहे हो तो हाँ प्लीज हाँ ट्राई करना, बिल्कुल भी नो. हाँ, मतलब आई थिंक इट वाज ऐसे लाइफ चेंजिंग एपिसोड था. मतलब आई वाजंट या इन द बेस्ट लाइक ऐसे स्पेस ऑफ माइंड, बट मेरे को देखना था कुछ, एंड आई मेड द मिस्टेक ऑफ वाचिंग द बेयर. मैंने पूरा एक रात में फिर खत्म कर दिया पूरा. एंड एपिसोड 7 इज लाइक समथिंग एल्स. मतलब इट्स अ फिल्म इन इटसेल्फ, एंड उसमें एक इट्स अ कैरेक्टर. शॉर्ट फिल्म इन या इटसेल्फ. इट्स अ शॉर्ट फिल्म इन इटसेल्फ. एंड चलो ठीक है, हम करेंगे बात. And yeah, like if anyone is struggling with work, or particularly if you are feeling कि आप एक एज के हो गए और आपने लाइफ में ज्यादा नहीं मचाया, so हाँ. do you still have a shot at life, Yeah. you I should think like more than watch. age, it's in general about anyone who feels कि वो मतलब एक वो, सेल्फ डाउट है हाँ, जिसको. कि प्रेशर होता है ना कि you have to like find what you have to do, and वो पर्पस होना बहुत जरूरी है, and उसका पूरा एक उन्होंने वो दिया. And So yeah, yeah. and one more very interesting thing, season 2 episode 4 of The Bear is directed by Rami Yusuf. Rami का एक खुद का भी शो है by the same name, Rami. Yeah. And मेरे को पहले पता चल गया था Rami has directed one episode of it, but season 4 episode 4 is extremely cinematic and it's beautifully done. So ये शो देखिए. Yeah. Yeah, and all. In fact, there is एक one thing I wanted to say. Yeah. So before watching The Bear, what I was watching was Shameless, जिसमें ये है what's his name? I can't remember his name. Jeremy Carney. Allen White. Yeah, Jeremy Allen. And in that, I must have watched like 6 to 7 seasons. And even in that,
he's this brilliant, angry, self-destructive Hmm. kid. And to see the bear after that, I feel like it's almost it's the same person but in a different setup. I Yeah. don't know how many people would agree, but I think it was very interesting, and I would like Vaibhav to watch Shameless, at least thode episode, Yeah, I just was for the about to journey ask you. sake. Yeah, I don't know how much you'll enjoy the plot, and because it's a very very long show, I don't aram se 10 seasons to hai, so I don't know how much you would enjoy it. But I think just for Where genuine is it sake, available? I think it's on Prime. It's on Prime. Okay, I will And watch. did you guys watch that interview of him and Jennifer Coolidge? Oh man, actors on actors का Jennifer Coolidge and Jeremy Allen White का साथ में interview है. Like, yeah, please tell us, Disha. Yeah, so It, in that, I think he starts off by saying how like he was doing work for a really long time, and it is now that he's being noticed. And hmm, thinking about Shameless just like put that whole thing into context. And he has been working in the industry for so long, and I think his pairing with Jennifer Coolidge was so brilliant yeah, because it's man. the same for her. There are some amazing pairings in on actors on actors. There's an episode with Pedro Pascal and the beef वाला actor Steven Yeun. Like, वो थोड़े से semi cancel हो गए थे, but like Pedro is with him. So there are some people जो next new generation Keanu Reeves है, meaning उनको कोई hate ही नहीं करता. जैसे there is Pedro Pascal. Pedro Pascal को दुनिया में आप किसी से भी मिल लो जो Last of Us वाले actor है, you won't find a single person who hates Pedro Pascal. There is Jennifer Coolidge. पूरी दुनिया गॉडेस बुलाती है, मैं गॉडेस बुलाता हूँ, दी वन ट्रू गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स. मैं हर 3 हफ्ते में एक पोस्ट डाल देता हूँ, गॉडेस गॉडेस जेनिफर कूलेज. आप हेट ही नहीं कर सकते. सो ऐसे 4-5 लोग हैं इंडियन इंडस्ट्री में. कौन से लगता है तो मैं ऐसे कि जिनको कोई हेट नहीं कर सकता. Irfan Khan. Yeah, Irfan. मैं यस, वही बोलने इरफान. वाला था. Yeah. द फर्स्ट वन इज इरफान among You the know, this like. is like weird, but sometimes I think of जैसे Jennifer Coolidge अभी काफी popular होगी and people have started accepting her for her weirdness. Yeah. Not in terms of acting, but an Indian parallel I think is Rakhi Sawant because Yeah. अभी Okay. recently people have really started appreciating her sense of humor, and I can Her see that and people are. it's not sense of humor, it's actual philosophy, dude. Yeah. या वो कहीं कभी कभी बहुत डीप बातें बोल देती Yeah. है यार. I Uh-huh. saw And a she's reel. so entertaining. I Yeah. mean, she's relentlessly entertaining. I want 1 minute. Yeah. Yeah. I wish you would commercialize it, but वो कर ही रही है यार, यही तो कमर्शलाइज कर अरे रही है वो अच्छा. सब ये इंस्टा पे न्यूज चैनल्स का जो ये है वही हाँ. आई थिंक दे आर प्रॉफिटिंग. आई डोंट नो Dude, अबाउट Rakhi Sawant's every living second of her life she's making money. And Yes, उसने बहुत yes, बढ़िया yes. figure out कर रखा है. अभी वो like एक वो हाँ, या इंस्टाग्राम पे एक अभी फीचर है ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाला. तो मतलब यू कैन मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड सेंड लाइक एक्सक्लूसिव अपडेट्स. हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हमें हमें कब मिलेगा, बट एनीवे राखी सावंत का एक है. एंड उस पे द मैसेजेस दैट शी सेंड्स टू पीपल, मतलब वो अपने आप में वो क्या बताओ बताओ बताओ. जैसे वो है ना नवल की किताब छपी है ना कि उसके ट्वीट्स की, वैसे हाँ. एक वो उसका उस मैसेजेस की व्हाट आर छपनी यू चाहिए. सेइंग? हाँ, वो उसमें अलग अलग ऐसे जीवन Yeah. के सार बताती है, तो काफी I सही saw है. a reel today and she was getting out of car. I don't remember the shairi, but whatever it was, I was like, oh, this is good. या. I love that, and I love how people are actually enjoying her so much. For so long she was cancelled and neglected, या. but now everyone really likes her and actually supports her. आई और थिंक अभी लाइक वो पीपल फाइनली अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक जॉनर Yeah, है yeah, yeah. जिंदगी एक जीने का. जॉनर है. Yeah. या कि And जैसे sometimes मैडम मैडम आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मेरा मोड ही नहीं है पेमेंट करने का. Yeah. Yeah. I think Bad someone humor. very close to her died, or like she had a her separation or mother. something. Yeah, her mother died and उसके बाद like she made these, I don't know, थोड़ा dark है ये. Like she was crying and you were watching it and you found it. आप समझ रहे हो, like बीच में वो ऐसे रोते रोते करती थी, नहीं मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मेरा तो कोई एक जिंदा लाश वाली उसकी रील बहुत चल रही थी. आई डोंट नो. सो उसको कैपिटलाइज करना तो आता है, लाइक एनी इमोशन, लाइक कोई भी हो जैसे भी हो, लाइक शी डज इट. वो yeah, and Puneet super, like guys we Yeah. should also talk about Puneet superstar in Big Boss OTT. हाँ. मतलब आप कुछ, मैं बताऊं लाइफ में आप कुछ देखो ना देखो, सलमान जब पुनीत सुपरस्टार की जो एंट्री है बिग बॉस में, वो 10 मिनट देख लो, एंड द लेवल ऑफ
उसमें आप फिलॉसफी सीख जाओगे, उसमें आप लाइक दुनिया में जितनी इनइक्वालिटी है ना सब सीख जाओगे कि एक बंदा जो बहुत बड़ा बन गया है विदाउट लाइक गोइंग थ्रू द लाइक द कॉर्पोरेट लैडर और द फिल्म लैडर, व्हिच इज पुनीत सुपरस्टार स्टैंडिंग विद सलमान खान, हु डजंट अंडरस्टैंड ये कौन है और इसकी बहुत ज्यादा फैन और ये फॉलोइंग क्यों है? और Is ये Big क्यों है? Boss nice? Yeah, No, but he Big got Boss is nice for evicted. one hour when Puneet Superstar is there because they came Yeah. out in first episode. It's this, yeah, the second episode जिसमें पूरी सुपरस्टार है. मैंने जीवन में बिग बॉस नहीं देखा है. मैंने एक एपिसोड देखा, वो पूरा एंड टू एंड मैंने बैठ के देखा कि भाई ये देखना है मुझे. Yeah. Where can we watch it? जियो सिनेमा. Geo. मुकेश भाई ने So, फिगर आउट कर रखा है. The Wire और बिग बॉस ओटीटी दोनों आपको जियो में देखने को मिलेंगे. भाई मुकेश भाई जो गेम खेल रहे हैं ना वो सबको केटर कर रहे हैं. हाँ. Yeah. वो हिंडोल को कर रहे हैं, वो दिशा को कर रहे हैं, दिशा की कोई स्कूलमेट होगी, इसको क्या पसंद होगा, हर जने के लिए कुछ है वहां पे. तो आप आओगे जियो पे ही, हाँ. Yeah. है ना. Yeah. Yeah. So yeah, man, like you should see Big Boss OTT, like and like Puneet Superstar का अनुराग माइनस वर्मा के साथ एक पॉडकास्ट है, which they recorded in 2021, where he had predicted that he'll go on Big Boss. He had spoken to someone for Big Boss, and that person has told him, तेरे को मैं Big Boss में ले आऊंगा, पर तू जीत नहीं पाएगा. और उसने कहा आप मेरी एंट्री भी करा दो, वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी. एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. और ये 2021 का So, who is Puneet Superstar actually? For like just context for everybody. who Puneet doesn't- Superstar is a male version of Rakhi Sawant, but a little more unhinged. राखी सावंत walked so that Puneet Superstar could run. तो ये है basic summary. But like Puneet Superstar, I feel like he is sort of in tune with the humor that he's catering to. But with Yeah. Rakhi Sawant, usko I don't know पता है वो. Both of them are नहीं, extremely पता है sensitive. भाई, राखी को पता है, 100% पता है. ऐसा नहीं हो सकता दिशा की वो ये ना जानते हैं. अरे Impossible. just see her कॉफी विद करण का, अगर आपको लोग एपिसोड याद हो, उसमें रैपिड फायर में जो उसने आंसर्स दिए तो उसमें क्लियरली पता चलता है she knows what She she's knows talking her, about. yeah, she knows what she's talking about. Every See, time I Hal think of 9000 Rakhi is stuff. saying Puneet is more self-aware. Yeah. इनफैक्ट वैभव और मेरी यही बात हो रही थी, लाइक अगर आप वो सलमान वाला बिट देखोगे ना, उसमें पुनीत नोज कि ओके दिस इज द लाइन दैट आई कांट क्रॉस, क्योंकि ये सलमान खान है, ये कुछ भी कर सकता है, ये पीट देगा मुझे यहीं पे. तो वो एक था. But just study those 10 minutes for the facial expressions of Salman Khan. ये क्या बंदा है और कैसे है, like मतलब वैसे क्लिंच करके रखी होंगी उसने अपनी फेस को कि कब मुक्का मारूं मैं. और पता है पुनीत सुपरस्टार अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू करते हुए आता है, क्या कर रहे हो मेरे ये आजकल के नन्हे बेरोजगार लड़के और वे उसका फोन ले लेते कि आपको पता ना फोन नहीं लेके जा सकते. फुली अनहिंज्ड बंदा. एंड yeah man, like he comes from the TikTok generation and we were like as Chalchitra big on TikTok. So I am among those people जो TikTok पे जो लोग आए थे और जो बड़े हुए थे, और फिर जब इमिग्रेशन हुई थी इंस्टा पे, मतलब I have a lot of sympathy for them because बहुत लोग इमिग्रेट होके नहीं आ पाए थे इंस्टा पे, and people used to look down upon TikTok creators. So दुनिया में बहुत लोग look down upon people like Puneet Superstar. Yeah. And just see him for the same reason, see him standing with Salman Khan in the same frame. Both are big. In some level, in some ways, he's kind of bigger than Salman Khan in some ways. मतलब अपनी एक इंस्टा वाली ऑडियंस के लिए. मतलब मैं मान रहा हूँ कि एक ब्रांड है, दोनों को बोले ये रील डालो, हो सकता है पुनीत सुपरस्टार की ज्यादा चल जाए. There is a possibility. Yeah. So there is this article I had read about, I think वो this Waddle का था शायद, I might be mistaken, talking about the same thing, how like TikTokers couldn't transition to Instagram successfully because Instagram as an app is far more elitist and classist. it's as compared elitist. to It's definitely elitist. हाँ. Yeah. हम लोग पुनीत सुपरस्टार की बातें कर रहे हैं और उसी लाइन पे आया है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट असगर फरादी पे. भाई रुको, अभी हमारा राखी. I would want Asghar Farhadi to make a movie on Puneet Superstar. This would be like the सारे फिल्म फेस्टिवल में 2 साल 3 साल तक चलती रहेगी. Yeah man, and like राखी को भी ले आओ. और कौन है इस लीग में? राखी सावंत, पुनीत सुपरस्टार, like who are the other OGs of this? We have to name the legend KRK. KRK ने अपना एक नीश पकड़ा और उसमें उसने भाई ने बढ़िया दुकान चल रही है भाई की. आप लोग पाकिस्तानी रोडीज वो देख रहे हो क्या बंदे का रील्स में जो आता है? मेरा सिलेक्शन हो गया. मेरी सिलेक्शन हो गई. मेरा सिलेक्शन. My Why did you know favorite what is this to clip. about?
हाँ, एक ऐसी क्लिप है जिसमें एक लड़की होता है और लड़की होती है और एक लड़का होता है, एंड दोनों मतलब ऑडिशन करने के लिए आए होते हैं. I know what you're एंड talking about. you've seen this, right? So he asked the guy कि ये लड़की कैसी लग रही है आपको. तो आई थिंक he says beautiful या sexy या कुछ. एंड फिर वो लड़की को बोलता है, तो वो सोचती है 2 मिनट, फिर बोलती है ये मेरे को मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है. Oh God. Vaani, you have to watch it. I'm telling you. I'm इसको आप बीट ही नहीं कर सकते. I'm happy to watch this. मुझे बस ये टेंशन हुई थी एक सेकंड के लिए because like obviously now I'll start getting recommendations of this on my Instagram. No, I want to I'm start looking you watching would forward to my want this. feed now. You would I've want been this. living under a rock. उसमें एक और है कि वो जिसमें दूसरे बंदे को बोलता है इसको हंसाओ, वो उसको गुदगुदी, ओए मेरे को गुदगुदी मत करो. So is it like Pakistani version of Roadies? हाँ, so they it's have- called Yeah. लिविंग ऑफ द एज या ऐसे कुछ तो नाम है. एंड उनका ऐसे कुछ तो है, कॉल सिंबल बनाना होता है अजीब सा. एंड इट्स वेरी लाइक मतलब, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. ये पूरा वो लोग लिख के क्या तैयार बात करके कर रहे हो? लाते हैं. और मतलब बिकॉज द थिंग इज पाकिस्तान में टेलीविजन इंडिया से पहले आया था, सो इन टर्म्स ऑफ लाइक ह्यूमर एंड एवरीथिंग वो लोग हमसे काफी आगे. मतलब वहाँ पे लाइक प्रॉपर ब्लैक ह्यूमर टीवी पे होता है. लाइक अगर आपको वो वाला भी याद हो, अब्बा हारमोनियम खाते थे, वो वाला भी जो मीम था, हाँ. वो भी एक वैसे ही शो से आया था. लाइक लूज टॉक नाम है उसका, वो भी ऐसे ही था पूरा. लाइक it's like between two ferns but like done in the 90s. वैसा उनका है सेंस ऑफ ह्यूमर. सो which is why like all these like ये पूरा जॉनर है अपने आप में. एक वो वाला भी है ना, एक कोई बंदा होता है, उसको बोलता है पूरे सीरियसनेस के साथ बोल रहा होता है कि देखिए आपने मेरी ना सारे हदें क्रॉस कर दिए, सो डोंट लिमिट द क्रॉस. या मतलब अभी मैंने अभी रील डाली थी मूवी क्लब में कि एक बंदी है, वो बोल रही है my favorite content creator is Martin Scorsese. He made this video called The Irishman, and it's like a long video. Every line would trigger a cinephile. Like, मतलब मर जाए भाई, कोई cinephile देखे ना वो मर जाएगा. कि God. कि my favorite content creator is Martin Scorsese. Oh ho. Beautiful. Guys, जल्दी से कमेंट्स में बताइए 21 जुलाई को आप पहले बारबी देखेंगे या ओपनहाइमर. हमें यहाँ पे भी सब बताएंगे. एक ही नाम बोलना है, दोनों मत बोलना. बोथ ठीक है. We'll start with वानी, बारबी और ओपनहाइमर. If I just have to watch one. हाँ, if you can watch one. अगर सिर्फ आप एक ही पिक्चर देख सकते हैं. Barbie. I don't want trouble. दिशा? Barbie, but if it's a sequence thing, I'll watch Oppenheimer first. Yeah, same. Oh, Same as Disha. अच्छा. हिंडोल? जो पहले पैसे दे उनको वो देखूंगा. Pick one, please. सब ओपनहाइमर. यार मेरे को पता है, रियलाइज हुआ जब भी अपन क्वेश्चन पूछते हैं बारबी फैन फॉलोइंग कम है इंडिया में. यार पता है, मैंने ना ये पोल 4 अलग अलग जगह पे किया है, इसी महीने किया है. मुझे 4 अलग अलग रिजल्ट मिले. एक हमने मीटअप में किया था, वहां पे ओपनहाइमर मेजॉरिटी थी. ट्विटर पे किया, ट्विटर पे बारबी मेजॉरिटी थी. मूवी क्लब पे किया, 50-50 आया. इंस्टाग्राम पे मैंने किया, बारबी मेजॉरिटी थी. तो ये अजीब ही I चल रहा है. think it has to do with our male to female ratio, Yeah. audience का. Yeah. That's it. No, but Wait like till मेरे को they're लग रहा था fruitful to males Barbie. would be much more comfortable picking Barbie. मतलब ऐसा हाँ. वही तो पूरा They're not पूरा in touch with their feminine side. yeah. अभी So- किसी ने ट्वीट भी किया था ना आज, आई थिंक मेघनाथ का ट्वीट था कि अगर आपको आई एम अ बार्बी गर्ल वाला जो गाना था, लाइक हैव यू एवर लाइक पेड अटेंशन टू द लिरिक्स. ये मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था. मुझे उस ट्वीट के बाद रियलाइज हुआ कि उस गाने का एक्चुअल मतलब क्या था. एंड वो ट्वीट इसी बारे में था कि हमारे स्कूल में बचपन में हर जगह वो गाना चलता रहता था, एंड एवरीवन वाज थिंकिंग हाँ ठीक है बारबी है ना तो बच्चों का गाना होगा. बट अगर आप ध्यान से पढ़ो उसके लिरिक्स क्या है, इट्स लाइक वेरी मेस्ड अप स्टफ. सो हाँ. अरे भाई देखा आपने कुणाल के साथ One of my core, sorry. या हाँ. बोलो. One of my core memories is dancing to that song with my mother. Yeah, I think this was the first song, English song that That I had actually, heard like, in. your parents would actually force you to Yeah. listen. Yeah, to, I had apart that from, of cassette. course, AC/DC. और मेरी जो कजन सिस्टर्स थी उनके पास वो बारबी का डॉल हाउस होता था. वो जो और वो उन्होंने शायद रिक्रिएट किया है वो मूवी में एग्जैक्ट वो जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल है, देन मतलब एक साइड से जो पूरा ओपन है. मतलब इट्स वेरी I फैंसी. think partly I'm going to watch Barbie out of guilt also because all the Barbie dolls I had, I would experiment in them. किसी की शक्ल हरी, किसी आप के करते बाल थे क्या कटे वो हुए. कि उसकी हाँ. टांग I को was हाथ the- में लगा दिया और फिर ऐसे you are मुंडी you are that Yes, kid I from was Toy that Story. I was that kid. And it used to be हाँ. such
I realized जब like लोग और मुझे वानी Barbie फिर dolls डॉल्स को gift ऐसे करते थे. तोड़ती थी और फिर वानी बोलती थी डोंट टेल मामा. Got the reference? Got the reference? Sharp ending. Yeah, But yeah, yeah, please, I Vaani. remember the shock on the faces of the guests who would bring Barbie dolls for me and they would watch in horror Yeah. how I Yeah. would Have destroy you guys them. seen the tour of the set Yeah, yeah, Yes, yeah. yes. of the आर्किटेक्चर Barbie डाइजेस्ट set? में आया था And like ये. just It's so watching that makes you realize कि they've made this movie with so much love and Yeah, given so man. much Yeah, attention to all the yeah. little details. अभी Yeah, आज yeah. एक वो पोस्ट आया ना, सो टॉम क्रूज का एक वो अभी उसने अडॉप्ट कर लिया कि थिएटर मतलब टॉम क्रूज, ये अभी उसके लाइफ का फिलोसफी है. तो ही हैड पोज्ड इन फ्रंट ऑफ द बारबी पोस्टर कि भाई बारबी देखो, कम टू द थिएटर्स बेसिकली. सो बारबी टीम लाइक Went to रिक्रिएटेड the दैट. Oppenheimer हाँ, one. उन्होंने ओपनहाइमर का भी किया, मिशन इम्पॉसिबल का भी किया. सो नाउ एवरीवन इज वेटिंग कि नोलन और सिलियन मर्फी क्या ये रिक्रिएट कर पाएंगे, अगर बिकॉज ये बारहवीं के सामने आ गए भाई. Oh. 1 second, ये टॉम क्रूज की मूवी कब रिलीज हो रही है? 14th जुलाई, लाइक एग्जैक्टली तो 1 वीक. उसके पास एक हफ्ता है, जितना एक पैसा हफ्ता निकालना है निकाल लो. है. my god. But I am hearing I really good things yeah. about this Tom Cruise film, वो the new Mission Impossible dude, one. so the okay, again Avatar Way of Water, controversial topic, but उसमें IMAX में they had played a special feature, ये YouTube पे भी available है. एक वो stunt है जहाँ पे वो पहाड़ से वो बाइक लेके पूरा जंप Hmm. करता है. So Yeah. before after आप गायब, आपकी आवाज गई. Excite, हाँ. हाँ, so they showed that stunt का making video in IMAX before the movie started, and सिर्फ आप वो वीडियो देखोगे ना, it's the best trailer for any movie. तो Yeah. उसके लिए तो मुझे देखना ही है मिशन इम्पॉसिबल, बट Same. तो या या अब बताइए गैस, कितने लोग, 190 लोग देख रहे हैं. अब आई ना हाँ. फील, अब हम ब्रांड हाँ. प्रमोशन करेंगे जल्दी से. लाइक कितने हो गए ये बताओ जल्दी से. और मैं आप लोगों को एक बहुत कूल प्लग देता हूँ गैस. मैंने लाइफ में पहली बार इंस्टाग्राम से एक इंस्टाग्राम एड से कोई चीज खरीदी. सो देयर इज दिस कप, मैं थोड़ा चम्मच निकाल देता हूँ. ये मेड ऑफ अर्थ करके कंपनी है, MAE. मैंने देखा कि इनका इंस्टा का ऐड आया, मैं गया इंस्टा के ऐड पे, फिर वो जो बंदी है डॉट, जो आर्ची मूवी में भी आ रही है, उसके एस्थेटिक्स बड़े पसंद है. मैंने देखा कि फॉलोड बाय डॉट आ रहा है, मैंने कहा अच्छा ही होगा. मैंने ये ऑर्डर करा और बहुत एस्थेटिक कलर्स है, एंड मैंने ऑर्डर करा, मैंने खरीदा. देन देयर टीम कॉल्ड मी फॉर अ फीडबैक कॉल एंड दे वर लाइक कि, और मैंने एक दो चीज़ें बताई और मैंने बताया मैं बाय द वे यूट्यूब वगैरह का चैनल वगैरह है, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट है. देन देयर फाउंडर कॉल्ड मी और मेरे को इतना फील आया क्योंकि मैंने कहा हम चलचित्र में भी फीडबैक्स ऐसे ही लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं वगैरह. मैंने कहा यार आप लोग बहुत कूल लग रहे हो मेरे को, देखते हो आप जैसे फीडबैक ले रहे हो, यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, आई विल गिव यू अ शाउट आउट फॉर फ्री इन माय नेक्स्ट लाइक लाइव स्ट्रीम. जस्ट लाइक आप सब हमारी टीम्स को लाइक सेंड द कप्स. सो अब हम चारों गए शो योर मेड ऑफ अर्थ कप्स. हम सबके अलग अलग कप्स है. हिंडोल थोड़ा और पास लाओ. या सो है ना, these cups and like सब इसके बारे में एक चीज बताओ जो नोटिस की. Yes. दिशा को एक चीज पसंद आई थी, दिशा कैन टेल. It is very lightweight, so and it has a lid also. My lid is Yes. inside somewhere, Yes. so it It is comes so with a convenient. coaster. मैं तो अभी गाड़ी में गई थी कभी सुबह सुबह सुबह, and I carried my coffee in this, and I carried the cup with me, and it was very convenient. वेरी Yeah. नाइस, वेरी नाइस. That's lovely. वानी हिंडोल आप लोगों को कैसा लगा का? Hindol and I wait कौन बोलेगा. हाँ. I loved the fact that it comes with a sort of lid which kind of works as a coaster, because my biggest irks in like I have a coaster in every room and at every Yeah, possible yeah. location. I just Same. Yeah. Yeah, and they have these letters they send और उसके पीछे हमारे सबकी ड्राइंग अलग है. वानी and I have same, and this उन्होंने VM square और दिशा I think उन्होंने color के basis पे ये किया है, because mine हाँ. is the same. हाँ. And Oh yeah, that's a little warm. This is a little wintry Yeah. sort of. Oh, Oh, interesting. nice. Good one, Disha. Sorry Nice. guys. Yeah. So yeah, this Yeah. हमने इनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाला है, टीम देख रही है तो डाल दीजिए. हाँ. मेड ऑफ अर्थ मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ. और आप लाइक कितने हो गए? अब हम पहला गेस्ट बताएंगे जिनके साथ हमारा गेस्ट एपिसोड होने वाला है. ठीक है, इतने टाइम से आप हो चैट में, तो अब आपको बताते हैं 202 लोग देख रहे हैं. So we have around 6 to 7 guest episodes lined up. मैं सोच रहा हूँ कौन सा बताएं इनको जो होने वाला है. So okay, I'll tell the first one. Then we'll tell you more. Okay. Very good chance
Uh, I am recording an episode with Rasika Duggal in the coming days. And Rasika Duggal को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा. We really like her. So we have an upcoming episode with Rasika Duggal. There is a big episode. उसका date confirmation आ गई है मेरे पास. Time confirmation आ जाए तो मैं बता दूंगा. हाँ, One of the, वो रुक जाता है, वो वो 300 नहीं बता लाखों रहा. में तो बोले, हाँ। वो 300 लाइक पे बताऊंगा. And yeah, there are more, like we'll tell you about those also. मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कोई लॉक ही नहीं हुआ क्या. मेरे पास तो 7 नाम थे, सब भूल गया मैं. Yeah. But yeah, There is, Rasika. हाँ, the हाँ. one that I am excited for, मैं नाम नहीं लूंगा, like मैं hints देता हूँ, ठीक है? Let's see like if people can guess it in the chat or not. तो okay, क्या hint दें? This person is a producer and इनके पापा भी ऐसे बहुत बड़े producer थे, Oh. and yeah, that is the first hint. And अभी recently इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया था, so yeah, इनका एक हाँ, शो आया है जो हाँ, आप लोगों ने सबने देखा. इट्स लाइक एस कमबैक, और हाँ, as if वो फ्यूचर से वापस आए हाँ. टू मेक दिस शो. मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑब्सक्योर थोड़ा ऐसे लेफ्ट फील्ड ढूंढूं. मैं अपने नाम छोड़ के सब बोल दिया, बट हाँ ठीक है, चलो लेट्स सी पीपल कैन गेस. अभी भी कोई नहीं. लोग करण जौहर बोल रहे मुझे हैं. भी नहीं, नहीं समझ में आ रहा. हाँ, हाँ, मतलब देखते ऐसे मान लो कोई 2050 से आया हो. And honestly. That Yeah. was so obvious. वानी 5 नहीं, वानी का रिएक्शन 5 सेकंड सुने. That was so obvious. But I was, because this, so you know what, Hindol, like when Vaibhav and I stream, Vaibhav does the same thing. हमें नहीं बताना है, ठीक है? अभी हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे. This is what Vaibhav, like we'll just let the guest confirm. We'll just closer to date बताते हैं. First 10 minutes and he'll give a hint, which is even worse than the hints I gave in the quiz streams that we used to have. Mere hints used to tell the answers. Even worse. Like, are you giving hints for the sake of hints, or do you even want them to try and get excited? Good one. So हाँ, अभी ये 2 गेस्ट हो गए. 2050. And there is a very, ये मेरे को बताने दो यार. देखो 2 बहुत बड़े हैं. ये मैं डायरेक्ट नाम बता रहा हूँ. गाइस बहुत खुशी होने वाली है. लाइक्स बता दो. देखो ये बताने के बाद 50 लाइक और आ जाने चाहिए. ठीक है. अभी 190, अगर हम We'll थोड़ा wait. वेट करें, Web of हाँ. 210. 210. 210 पे हम बता देंगे. ठीक है. 210. Guys, चलो. please. हाँ, Like चलो this गाइस. stream. प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम. मोर रिकमेंडेशंस कमिंग योर वे. मैंने 5 स्टार किसको दिए हैं, 5 स्टार किसको दिए हैं, 5 स्टार किसको दिए हैं. I actually started watching the Rocket Boys today, and मैंने उसका एपिसोड 1 देखा, and like I sent a voice note to Hindol. मैंने कहा ब्रो ये तो बहुत ही ज्यादा सही है यार. मेरे को लग रहा था कुछ they will like make some errors in the way it looks, or there will be some like inconsistencies, क्योंकि पास्ट जब भी आप दिखाते हो, जब भी आप पीरियड फिल्म्स बनाते हो या पीरियड शोज बनाते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और इतना हैवी टॉपिक लेके गेटिंग इट राइट. सो मेरे को बड़ा फील है. एंड कहीं पे भी उन्होंने डम डाउन नहीं किया. जैसे अगर आप नहीं किया है. जैसे मिशन मंगल में उनको वो लॉजिक समझाने के लिए वो लोग पूरिया तल रहे थे कि एकदम ही मतलब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया. यहाँ पे लाइक दे एक्चुअली रिस्पेक्ट द ऑडियंसेस इंटेलिजेंस कि हाँ ठीक है तुम समझ जाओगे. लाइक इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू विल लाइक अंडरस्टैंड कि ओके हो क्या रहा है. सो उस लिहाज से मेरे को काफी सही लगा. एंड मतलब हमेशा होता है कि पीरियड मतलब हम सोचते हैं कि लाइक बहुत बड़े सेट्स होंगे, एकदम मतलब भंसाली फीलिंग होगा, बट उसके अलावा भी पीरियड पीसेस हो सकते हैं. उस सेंस में इसका लाइक काफी स्मार्टली इन्होंने शूट किया. लाइक मेरी भी यही बात हो रही थी. सो या एंड देयर इज अ बुक कलेक्शन आई वांट टू रिकमेंड. वानी ने ये अक्टूबर 2022 में पिक की थी. आई एम लेट टू द पार्टी बट आई एम प्रॉपर्ली रीडिंग इट नाउ. It's Lust for Life, Vincent Van Gogh की. But I'll tell you the best way to read it. I am also reading it with Letters of Vincent Van Gogh. So Lust for Life is basically थोड़ा fiction like story. मतलब fiction नहीं, मतलब इसको ऐसे story telling perspective से बताया है कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. But उन दौरान like what was Vincent Van Gogh thinking? उन्होंने letters के through जो अपने भाई को लिखे थे वो इसमें. So I read 10 pages of like Lust for Life, and then I read कि Vincent Van Gogh ने actually क्या लिखा था. तो बड़ा मजा आ रहा है यार ये दोनों साथ में बैठ के. आई डोंट नो इफ यू हैव एवर ट्राइड दिस कॉम्बो ऑफ रीडिंग अ बुक व्हिच इज लाइक अ बायोग्राफी देन रीडिंग द एक्चुअल लेटर्स. सो प्लीज ट्राई दीस बुक्स टुगेदर, है ना.
ABAM spotting, like ये comment highlight कर देता है दिलजीत का. Also Vani, do you want to reveal the book for the month अगर अच्छे खासा like आ जाए तो? Yeah, we can do that. हाँ, तो अभी 197 लोग देख रहे हैं. Thoughts about lust story. मैंने सुना है कोंकणा सेन शर्मा की बहुत ही ज्यादा अच्छी है. So Is it out? Sorry, I'm living under a rock. I'm sorry. it came out today. अरे 210 लाइक हो गए यार वो लोग. वानी अब बताना पड़ेगा. एक और बता देते, अभी दो बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं मेरे साथ. सो सबसे बड़ा वाला मत बताना बस. सो वेरी गुड चांस, मतलब लॉक हो गया. डेट नहीं मिली मेरे को, डेट टाइम अभी बात चल रही है. वी आर डूइंग एन एपिसोड विद, ड्रम रोल कर दो कोई यार एक बार रिएक्ट में जाके. Oh, sorry. नहीं वो भी चलेगा. चलो. So we are doing an episode with Munawar Farooqi. And it is going to be a lot of fun. Munawar Farooqi के बारे मेरे को, and he is a film of himself. मेरे को पता चला, like बहुत interesting. I think it is going to be a lot of fun. मेरे को लग रहा है पहले से ऐसे feel आ रही है, vibe match होगी मुनावर फारूकी के साथ. So that's there. आज आपने मेरे को भेजा था, who sent me that video की the first video, you had sent me that video, the first video he had made like after getting out. वो उसने पता है वही शूट किया जहाँ पे अपन ने कोनाल के सेम रूम. So yeah, there is a comment, भाई वानी बहुत इंटेलिजेंट है. ऐसा क्या हुआ वानी? अभी आपने वानी very long to realize. Out of the blue. So what can I say? Also, guys, a small flex now. A big shout out to Aakash, Hindol, the social media team. Mr. Vishal Bhardwaj, one of the greatest filmmakers of India, now follows us on Instagram. So हम इतना खुश हुए थे ना वो देख के. And he follows very few accounts. अरे एक फॉलो कम हो गया यार. Yeah. So और also मेरे को एक और की बहुत एक्साइट, अर्चना पुरन सिंह follows us on Instagram. मेरे को लगता है if we do an episode right with Archana Puran Singh, it will be a first episode with 1 million views on a long form episode. मेरे को because अगर आप अर्चना पुरन सिंह के देखोगे ना फॉलोइंग में, भाई वो डॉट से भी ज्यादा एस्थेटिक चीजें फॉलो करती है भाई बंदी. वो कपिल शर्मा सिर्फ मेरे को लग रहा है कि एक रीजन की वजह से, but I think she's very intellectual. I like her ever since I was ever since the days of Comedy Circus. Comedy Circus से since the days of कुछ होता है. She makes me feel very good about my laughter because like laugh freely. I used to think I have a very ugly laughter, and then I was like, no, but I can still laugh. I don't know. I'm sorry. I think it came out wrong. I was wondering. But I think she's just like, I love the way she laughs. Like there's nothing. Yeah, I in general really like people who laugh एकदम पूरा through their chest एकदम ऐसे roll. सब एक comments में भी just pick one. If who has a better laughter, Archana Puran Singh or Navjot Singh Sidhu, सब एक बताएंगे. Hindol. Archana Puran Singh. Archana Puran Singh. Yeah. I can't even remember. Used to clap like the thing is, the thing सिद्धू के लाफ्टर से पहले ऐसे एक पैराग्राफ बकचोदी आता था, तो वो थोड़ा that would become annoying कि मेरी चाची को अगर मूंछें होती तो मैं उसे चाचा बुलाता. ये उसने वर्ल्ड कप के मैच में ये कमेंट्री दी है. मतलब दिस इज समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट. मतलब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, मेरे को डिमेंशिया हो जाएगा, मैं चीजें भूल रहा हूँ अपनी लाइफ की, मेरे को ये याद रहेगा कि मेरी चाची को अगर मूंछें होती तो मैं उसे चाचा बुलाता. Yeah, but मेरे को बहुत स्टार्ट लगता है सिद्धू. मेरे को again I think he's a very intelligent guy and like again the kind of nuances he has. अच्छा एक और question. Who is a better whose laughter do you like? Archana. I would say Sidhu, but like Archana Puran Singh को अभी हमें चैनल पे लाना है तो like yeah. I have a question, like who do you think does better commentary? Harsha Bhogle और आकाश चोपड़ा. Guys, you can only choose one. आप बताइए आकाश चोपड़ा या हर्षा भोगले. Have you guys heard? Okay. Harsha Bhogle. I haven't heard Aakash Chopra. Yeah, me neither. आकाश चोपड़ा is the commentary you hear non-consensually. कि जब भी आप कोई भी क्रिकेट की क्लिप देखते हैं उसमें आकाश चोपड़ा की कमेंट्री होती है. नहीं
लाइक ऑन अ सीरियस दिस थिंग, जैसे आप बोलते हो ना कि लाइक इफ यू रीड गुड रिव्यूज तो वो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो हर्षा भोगले आई थिंक इन इन दैट सेंस इज अ लॉट लाइक फॉर इंडियन ऑडियंसेस। आधा क्रिकेट तो हमने वहां से सीखा है, द वे ही टॉक्स अबाउट थिंग्स एंड जेन्युइन पैशन है उनका, तो काफी सही है। लाइक ही इज समवन आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी ऑन द चैनल, ऑन एसएलएस और ऑन दिस चैनल, जहां भी Yeah. वो आना चाहे। Harsha Bhogle also had a podcast on ISRO, no? ISRO के हाँ ऊपर हाँ, उन्होंने इसरो की पूरी स्टोरी बताई है उन्होंने, तो आई थिंक काफी सही पॉडकास्ट है वो। मेरे को बड़ा सही लगता है यार जब एक किसी फील्ड के लोग जब ऐसे अलग चीजों में जाते हैं ना, Yeah. लाइक अगर गॉर्डन रैम से आके लाइक अब हुक्मंत कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, मतलब बड़ी फील आती है यार व्हेन यू सी Oh, लाइक I On want to that be Gordon note, Ramsay on a book a month now. Sorry. या दिशा या yeah, on that note, because of like the whole Titanic submarine situation, ओ I have been getting a lot of recommendations, and I wanted to ask you guys if you have seen James Cameron ka the Challenger 3D when no. he हाँ was हाँ in a हाँ, submarine and द went फिल्म, into the Marina Trench. So there is हाँ a documentary on this. It's a movie that he's made, and हाँ it's मूवी है या I've been hearing डॉक्यूमेंट्री such होगी good ना, things. क्योंकि अगर रियल लाइफ है तो I हाँ, don't know. मतलब I mean, I think ऐसे it's डॉक्यूमेंट्रीज been है जो, marketed. मैंने trailer yeah, देखा तो पता नहीं, yeah, but must be a documentary then. yeah. We have इट a इज द एक्चुअल फिल्म जिसके लिए उनको टाइटैनिक बनानी पड़ी, तो ये एक्चुअल फिल्म है, टाइटैनिक वाज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस। well, he आ, apparently has done a lot of dives and उन्होंने भी जो submarine बनाई, he was very involved in the process and he took like 7 years to make sure that it was perfect. And then so that blows my mind कि somebody who's so accomplished as a filmmaker also has other interests that he's equally accomplished yeah in. man. And you know, Mr. Beast posted a snapshot of Yeah. iMessage where he said he was invited to go on the Titanic submarine and he said no, and he's like अगर मैं चले जाता तो क्या होता। उसमें भी सबसे ज्यादा फनी पार्ट जो ही है वो ये है, इट्स अ ब्लू बबल। ब्लू Yeah, बबल तब yeah. आते हैं जब आप किसी को मैसेज भेजते हो। तो लोग ऐसे कह रहे हैं हाँ मेरे को एल्पाइन के लिए बुलाया था। एल्पाइन से याद आया, रायन रेनॉल्ड्स बॉट स्टेक इन Yeah, एल्पाइन। not that I support Alpine, but okay. हाँ, he bought like 25-30% stake in Yeah. Alpine. Yeah. So but like क्या You हुआ know, उसका? I'm so sorry I'm cutting you off. If somebody is watching qualifying, can you update us on like Yes, their current please. stats? We are Yeah. so dedicated. हमने qualifying miss की stream के लिए guys. Yeah. कहाँ पे हो रही है वानी आज? Austria. And it's the Oh, sprint. So tomorrow is the sprint. Today is qualifying. And of course. चलो nice. please और कोई continue. कोई एक बार उसका अपना उसका एशेस का भी स्कोर एक बार Charles is बता दो। nice. Sorry. चार्ल्स इज विनिंग। No, he's P2. P1 is of course. P1 is of course like Of course. Yuki Our Tsunoda. podcast host. Not our, but everyone ka podcast host. Yeah. Max In the Verstappen. Kunal Kemo episode also we discussed F1 like last में. Like there is a Really? segment on Nice. yeah. Yeah. I think I'm yet to. I like last 4 sections are left for me. Yeah. So और बताओ guys, Ashes का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया विनिंग एशेस स्कोर बताओ, स्कोर है ना? Yeah, So ये I have some P3 पे. product recommendations if you guys want to go Oh, into Yeah. that. Yes. Like I don't know how थोड़े random से है, but for the first time I have like some product recommendations पहले कभी नहीं थे. So Done. the highlighter you're holding in your hand, do you want to discuss this right now or? Oh yes, let's do this. Do you also have it now? Yeah. You are such an influencer, Vaibhav. Everyone has these Nice. highlighters because of you, I'm telling you. Nice. मैंने you know I found the नहीं, मतलब मैं फेवर हाँ कैसल पे काफी अभी लगा हुआ हूँ हाँ स्पॉन्सरशिप लाने के लिए। नहीं, I think we have given them the best marketing plug in Yeah, like yeah, one of the episodes that you guys are going to see, and हमें वानी Oh की yes. like एक spiritual वो मिली, like clone की तरह अगर आप Dude, कह Vaani, सकते she is you. Like She she is is you. really Shreya Pilgaonkar. Yeah, And like crazy episode है वो। yeah. Yeah, Disha, go on. Yeah, yeah, Hindol, so even अब I सब कुछ सब also बोल रहे हैं, मैं किसको सॉरी हाँ। बोलूं? जिसको बोलना है बोलो। लड़ाई करो यार। नहीं, आप like complete the thing. I'll just be back, guy. हाँ, हाँ. yeah, Disha. yeah, so even I have bought those. मैंने 4 लिए हैं. जो वो पेस्टल वाले हैं वो उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं. I think because of you only, because everyone's buying those only. So I had to get the regular ones. I got pink, green, orange, and yellow fluorescent wale. And Okay. one thing I want to ask you, mine have started sweating recently. Is that happening to yours? I don't know if it's because the weather has changed around here, but they are यार now आपके sweat.
ये आपको कप दिया था चलचित्र का, वो भी स्वेट करने लग गया था। ये आपके साथ I don't ये know. व्हाट इज दिस थिंग दिशा कि सेम आई डोंट नो यार आपके कप्स के साथ हो रहा है, माय कप इज But I sent you proof, okay? सो योर Yeah, but हाइलाइटर इज स्वेटिंग. yeah, there's like beads of the वो जो highlighter की ink है वो उस पे ये collect हो रही है बार Ah. बार. Is that Yeah, but happening with you, that Vaani? happens. I don't have it, but अच्छा, like, oh, आप हाँ बोल but रहे थे. it happens a lot. I think jab I used to frequent the bookstore also. I don't know Vaibhav if yours has it, but like it happens to quite a few pieces, and I think it's normal because these are the oils. I think. These are wax highlighters ना, so Yeah, मेरे yeah, को लगा कि wax. maybe it's just so hot है कि उसकी वजह से हो रहा है. इन But हाइलाइटर्स का ना हैरी पॉटर की वॉन्ड वाला सीन होता है, यू डोंट चूज इट, लाइक द हाइलाइटर चूजेस यू. सो अगर आपके हाइलाइटर स्वेट कर रहे हैं तो आपको दूसरा कलर ढूंढना चाहिए. This is a good thought. We can mm, make a story around this. Short Yes. story. Yes. Yeah, Disha, go on. yes. Also recently I started swimming, and one of the Nice. things. Do you know like ऐसे proper swimming? Yeah, I've been swimming since I was a kid. So Oh, nice. one of the things that used to annoy me immensely is that you would have to carry separate bottles of shampoo, conditioner, face wash, वगैरह वगैरह. And my brother gave me this gift. It's basically a travel bottle thing. I'll show you. So you Oh. can open it, and there are these bottles that you Oh, can fill whatever you want in, and it comes with these stickers. So आप label decide करके उस पे डाल सकते हो. So you have put shampoo, and they have like a bunch of stickers that it comes with that you can put. And I just think it's so convenient. I've put 4 products, so I just need to carry this instead of like Wow. 4 different bottles. how cool. And ब्रो this is on इसका Amazon. लिंक डालते हैं, इसका दिशा प्लीज लिंक भेजना, अपन ये पक्का Okay, डालेंगे, है ना. done. Yeah, काफी कूल. दिस इज आल्सो वेरी एस्थेटिक बाय द वे. it Yeah. is right, and it's available in different And colors. it's very good for travel also, I imagine. Yeah. You don't have to carry all the shampoo bottles and stuff. Yeah. And even when you buy the extra containers, they don't come in Uh-huh. like one box. So this is like very handy because they're all over Exactly. the place, and I hate that about them. This is nice. I Yeah, have and I a think you can buy yeah. वो bottles also separately. So in case you already have ones that are full, तुम दूसरे ले लो and then you fill them up and then put them in the. Yeah. But this is genuinely nice to have it in one holder for Yeah. everybody who has some OCD or has problem with things like just getting around. This is so good. Yeah. I have a product recommendation. विटामिन डी. गाइस विटामिन डी प्लीज लेते रहिए. कितने I लोग लेते हैं विटामिन डी, I have कमेंट्स में skincare बताइए. recommendations. या विटामिन डी जितने लोग लेते हैं एक बार बताइए. दिशा, डू यू टेक विटामिन डी? No, but I should because that is my lowest. I during COVID, when I got COVID, I had such terrible back pain because my vitamin D was very low. But I should. I will now. हिंडॉल, हिंडॉल विटामिन डी. क्या बोलते हैं, नॉन कंसेंचुअली ले रहा था, अब बारिश हो रही है तो अब आई एम नॉट टेकिंग विटामिन डी. Yeah. Wait, Vaani is so intelligent. sorry. Yeah, go on, guys. Go on. Yeah, I'm seeing movie ka in the comments, and I think this is a really good like gift recommendation. मेरे एक दोस्त का birthday है कल, and for him I got MovieGo. So you can gift MovieGo के Wow. gift वाले options होते हैं, and it's so nice, and it's the perfect. I think especially for CCT, it's such a Nice. good gift recommendation. And yeah, Mubi has been sponsoring a lot of our videos also. So yes, we are Mubi for life, right? So what else, guys? Like, I have skincare recommendations. please. So there's this brand that's I think Indian, and I love them. Very cheap, very convenient. So I have extremely dry skin. No matter how many products I use, my skin will still remain dry. And I started using this product called the Formula Relief, Formula RX, थोड़ा and और their आपको barrier hold relief. करना पड़ेगा. This Yeah. is what I started using. This is my third bottle. And if they are watching this video, please sponsor us. I would love to promote your brand. Yeah. But anyway, this is something I started using. And then a friend of mine recently came in and told me, so I had been using curd on my face a lot because I realized it just helps me feel better, fresh, whatever. And also, like, there's a glow on my skin. And so my friend recommended me this cream. It's called Airbrush Facial, but it's a lactic acid cream serum. And I use it at night before I go to bed. And I wake up with such glow on my face. And I was like, I'm a teenager again. But then this is the one.
And for everybody who has sensitive, or like for everyone who has normal to dry skin, try this cream called Barrier Relief. And for everyone, pick this Yeah. one, lactic So acid serum. Like it'll change lovely. your, you'll wake up feeling so pretty. I like. May I also add something to your skincare recommendations? I have Yeah, one Vani. yeah, yeah. Yeah. मेरे को मार्क्स एंड स्पेंसर के कपड़े बहुत पसंद है, तो मैं एक बार इनके शोरूम गया था। Oh, वहाँ पे मेरे को आई गॉट दिस लाइक बॉडी लोशन फ्रॉम देयर, इट्स कॉल्ड काम। आई डोंट नो yeah. फोकस में आ रहा है या नहीं, इट्स वेरी गुड। इट्स अ हैंड एंड बॉडी लोशन, सो आई कीप यूजिंग इट। And it smells very good. या सो मार्क्स एंड स्पेंसर्स वालों को अपना देयर बॉडी लोशन गेम इज स्ट्रांग। और हिंडोल क्या हालचाल? बात ही नहीं कर रहे यार हम। हिंडोल देखे Also, जा रहे क्या, कब वेयर से कहाँ आ मैं गए यार। मैं इसी बात से ये था कि यार मतलब साबुन और शैम्पू अलग अलग होता है क्या, मतलब मैं तो एक यूज कर रहा हूँ तब से। yeah. हाँ, एंड मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा ना दूँ, तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मेरे पास इंस्टाग्राम हैंडल रिकमेंडेशन है। एक तो सेकंड रुकोगे हाँ हिंडोल? एक मैसेज दिखाना, एक कमेंट दिखाना हाँ जरूरी है। हाँ यस, ये बहुत जरूरी है। विटामिन डी 60 के प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, हाँ। क्योंकि अब मतलब इट्स नॉट लाइक अ पिल दैट यू टेक एनी डे, यू हैव हम्म, टू टेक इट वेरी केयरफुली। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, गेट योर टेस्ट डन एंड देन लाइक जो आपको डॉक्टर बोले। थैंक यू सूरज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर्टिकुलरली फॉर विटामिन डी। प्लीज गो ऑन। कैल्शियम सैंडोज आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते नहीं नहीं भाई। You don't need अब तो calcium एक sandoz तो एक anymore, तो no? या और अब तो एक तो वो डाइट कोक में उन्होंने कोई केमिकल निकाल लिया जिससे हैं। हाँ, कैंसर होता है यार। और पता एस्पर्टेम, है, हाँ। एस्पर्टेम। बट यू कैन हैव कोक जीरो या पेप्सी, पेप्सी जीरो, क्या पेप्सी का क्या नाम है डाइट पेप्सी वाली? ब्लैक। पेप्सी ब्लैक और कोक जीरो में वो वाला केमिकल नहीं है। सो इन जनरल नहीं पीना चाहिए पेप्सी, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट। अरे बट मेरी लाइफ डाइट कोक पे चल रही थी यार, बट डाइट कोक और जो जो Guys, यू हाँ। आर sugar काउंटर is bad. You काउंटर shouldn't be इंट्यूटिंग, आप drinking विटामिन डी ले Coca-Cola. रहे हो, फिर आप डाइट कोक भी ले रहे हो, तो कैंसिल हो रहा है वो आपस में। True. This is one good thing that I've done in the past couple of months. There's a bee in my room, but I've stopped. I've like reduced my intake of artificial or added sugar by a lot of things, and my acne has reduced so much, and my skin is more clear, and it's just done wonders for क्लीन my एंड skin. क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। Confident का पता नहीं. But it's just like, and also I feel very good. Like I do have energy dips, but I know how to recognize them. Sugar ke saath to it was almost like I'm high on something or whatever. या I शुगर do इज have to बेसिकली हाई balance. ओनली Yeah. ब्रो, या वो आपको पैरालाइज ही तो Yeah. करता है। और या And it नहीं, took हाँ me some time. Like for the first, I'm so sorry, Hindol. हाँ For the first 2 weeks, I was like, I want something to eat, but then I kind of switched it to coconut water. But yeah, it's या nice. Yeah, मैं even हाँ I had tried the या elimination diet. I'm so sorry and हाँ all. मैं Yeah. आई हैव अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, फाइनली मुझे याद आ गया था, मैं बोलूंगा, बट हाँ नहीं, हाँ, प्लीज इट्स कंप्लीट। कॉल्ड it was एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन elimination डाइट। diet. हाँ। So in that I had quit gluten and a few pulses. I can't remember, sugar, dairy, and a few other things. For 2 weeks, you're supposed to quit, and then you are supposed to gently introduce it back to see if your body reacts to it. Right. And that was crazy because we को इतनी नींद आ रही थी. The first 2 weeks were terrible. I couldn't even finish it, I Yeah. think. But in the first week itself, I was falling asleep randomly at places and I had no energy. And I realized how much my Oh. body depends on sugar and gluten and other things for energy. Yeah. या बट देर द लाइफ का तात्पर्य हमें ओम ने बताया, डाइट को किल्स बट सो डज लाइफ। True. 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 नहीं, बट आई या हैव अ रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू कट शुगर, तो ये लाइक ऐसे प्रैक्टिकली ट्राई किया है मैंने एंड मेरे पापा ने। तो माय डैड हैज बीन डायग्नोज्ड विद शुगर, अभी थोड़े टाइम से ये चल रहा है, एंड ही हैज कंप्लीटली कट आउट शुगर। तो उसका टेक्निक उन्होंने ये किया है कि ही ओनली हैज लाइक वन स्वीट थिंग इन द एंटायर डे, विच इज डार्क चॉकलेट। तो रात को डिनर के बाद डार्क चॉकलेट हम लोग खाते हैं, तो
आई हैव एक्सपेरिमेंटेड लाइक एवरी सिंगल ब्रांड ऑफ डार्क चॉकलेट जो अवेलेबल है, एंड उसमें द विनर लाइक मैं टॉप 3 अगर आपको बताऊं लाइक विच विल रियली हेल्प इज इफ यू लाइक रियली लाइक द बिटरनेस ऑफ इट, इफ यू कैन लाइक एक्सेप्ट इट, अमूल का काफी सही होता है, अमूल का जो डार्क चॉकलेट आता है। Yeah. एंड देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड जेविक, उनकी ग्रीन कलर के वो आते हैं लाइक पैकेजिंग, तो वो भी काफी सही ब्रांड है। सो इट हैज लाइक अगर आप चेक करोगे लाइक शुगर फ्री डार्क वन पे कौन है? चॉकलेट, वन पे कौन है? वन पे जेविक है, जेविक एज लाइक ऐसे पूरा आपने ऑर्गेनिक। 3 बोले थे, अमूल, हाँ जेविक, बॉर्नविल का है भाई, बॉर्नविल। हाँ बॉर्नविल, सो बॉर्नविल लाइक इज हमारे घर पे काफी फेवरेट थी एक टाइम पे, बट उसका शुगर फ्री वर्जन नहीं मिलता, लाइक उसका वो इट्स द प्रॉपर शुगर शुगर वाला, तो वन सेकंड, वन वो है। सेकंड। सो जो Yeah. आप जेलविक और ये बता रहे हो, दे आर शुगर फ्री डार्क हाँ चॉकलेट। उस पे वो मतलब स्टीविया जो होता है विच इज लाइक द हाँ ऑल्टरनेटिव फॉर एस्पर्टेम वो जाता है, तो इट्स लाइक अभी तक तो इट इज हेल्दी, तो ये है मामला। सो या एंड आल्सो बॉर्नविल आप एक नॉर्मली नहीं और खा सकते, यू हैव टू अर्न अ अमूल, बॉर्नविल। अमूल हाँ डार्क चॉकलेट में स्टीविया होता है। हाँ शुगर फ्री वर्जन आता है विच इज लाइक एक्सट्रीमली बिटर, बट लाइक यू कैन लाइक इफ यू बट मैं अगर कैन, नॉर्मल अमूल डार्क चॉकलेट लूंगा उसमें तो होगा ना शुगर? हाँ उसमें होगा शुगर। हाँ Hmm. हाँ हाँ, Hmm. हाँ गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो हाँ हाँ क्या ओम रेलेकर ने बोला है ट्राई लिंट, हाँ लिंट का बजट होता तो हम नहीं होते लिंट यहाँ का पे। बजट होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते guys। सो या लिंट पता है, कभी कभी कोई ऐसे कोई चाचा ताऊ जब बाहर जाते हैं, देखो लिंट की एक चॉकलेट लाई है, मेरे तो ये रहा है मेमोरी में। बट ऐसे या वो एक रिटर स्पोर्ट भी एक चॉकलेट आती है ना जो मतलब काफी सही उनकी पैकेजिंग होती है, तो अब मुझे मतलब बचपन में काफी सही लगती थी क्योंकि फ्री में मिलती थी, फिर मैं खरीदने गया सुपर मार्केट में तो 420 रुपए का एक वो था, एंड लाइक 420 भी लाइक एक्यूरेट अमाउंट है, तो इतनी छोटी चॉकलेट के लिए 420 रुपए, तो लाइक ग्रेट, सी यू नेवर। Kushal, our godfather, has commented, I have been off gluten, dairy, nuts, and sugar for almost a month. I feel so light and active now. Although the initial few days were tough, but worth it. हाँ Hmm. Yeah. Sugar I was needs to off take dairy it. for a really, really long time, and it was the best decision I made. Like now, sometimes I do have cravings, but then, So बहुत when भी- you're off dairy, you don't eat eggs? yeah, I've quit eggs. You But I have don't know quit if that's eggs? done. I don't know. I don't know if that's a part of dairy. Yeah, Dairy में होगा but I ना? don't have No, एक it's eggs. सेकंड, in my- डेयरी referring to milk, no? डेयरी Dairy में is milk and I नहीं, but do you have eggs? Like I मेरे को have ऐसे वो occasionally. I'm like off chicken also. I had it yesterday, but like I hadn't had chicken in my defense in the past one and a half months. हाँ, अरे यार मेरे को बचपन के एक 7th स्टैंडर्ड का वो डायग्राम याद आ रहा था कि जब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स वो जो बने होते हैं उसमें एग्स भी होते थे, तो आई डोंट नो। या बट एग्स तो मेरे को लगता है यार, मेरी तो दिन की सारी एनर्जी एग्स से आती है, सो आई वुड रेकमेंड। डू यू गाइस ईट एग्स एंड ऑल, दिशा? आई डोंट। I do, हाँ but I have heard that like I there was this time I was following some plan by a nutritionist, and she had told me to quit eggs. So, but गाइस we ये changed to brown eggs now. हाँ, ये कर लो, ब्राउन Occasionally, एग्स ले लो। देयर इज अ eggs. Like, to be गाय, honest, I can't quit eggs because I love boiled eggs. या मैन, दे लाइक रियली And I can't have egg in any other. I mean, I've started hating eggs and animal products in general. Like, I don't know why. I just am not able to eat them. So I hate omelets for the life of me. But I love boiled eggs. And uske alawa, I've just quit curd and everything else, milk, and it's just helping a lot. गॉट इट। भाई शायद मैं सही था, डेयरी कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स, यही पढ़ाया था हमें स्कूल में। Intelligent Vaani. स्कूल में तो ये भी पढ़ाते थे कि कुरकुरे जलाओ तो उसमें काला धुआं निकलता है। ये कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? पता नहीं यार, मैंने हमारे सुना में था। एक्सपेरिमेंट होता था। सम्राज का बहुत अच्छा कमेंट है, डू यू नो इफ यू डोंट ईट शुगर ऑल मंथ यू कैन लूज 40% ऑफ हैप्पीनेस दैट इज लेफ्ट इन योर I लाइफ। agree ये कैसी wholeheartedly. But you know what the thing is, if you want to quit something, replace it with something else. Like I Yes, quit that sugar, I is replaced how I it have with it. coconut and this water. is why people cheat in relationships, but I think it's time to wrap it up. It दिशा was का so हो गया भाई। good. It was so good. Sorry. बट यार ये कैसी जिंदगी है समराज भाई की 40% भी खुशी है, मतलब ये कौन सी जिंदगी जी रहे हो? Exactly. हाँ। 40% खुशी is हाँ, 40 तो बहुत आए होते हैं यार। 40 तो मतलब 40 इज लाइक क्या बोलते हैं, दोज आर गुड नंबर्स। हाँ, these are not rookie numbers भाई, ये तो Oh Yeah. God. सही है, सही है।
Yeah. सो अभी वानी आप लास्ट जोक पे हंस रहे हो या थर्ड लास्ट जो अभी कौन मैं सा अभी वाला? like that's why people cheat in relationships. Because it was out of the blue, and Hindol obviously we know is very funny. He has a sense of humor. I think everyone on the channel appreciates. It feels like I'm giving my award speech. हाँ, ये I'd like माइन to जिंदगी में appreciate. -40% खुशी होती है तब ये ऐसी दिमाग चलता है बट गाइस Oh बहुत God. सही, अभी 230 लोग दिख रहे हैं हमें, फील आ हाँ गई। लाइक कितने हो गए? अब मैं लास्ट वाला बता दूं क्या गेस्ट जो है, या नहीं 270 की बात बताते वो? हुई थी वैभव. यार जिंक्स हो जाएगा नहीं करते हाँ Yeah, I don't know. I'm very like I am not a religious person. I like there's only I'm not superstitious in general, but I'm very afraid of jinx and हाँ nazar and everything. yeah. नजर इज रियल भाई, ट्विटर पे किसी ने लिखा था अभी परसों की डोंट ऐसे लाइक टेल, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ट्विटर पे मत बताओ किसी को, फिर अंडू हो जाता है वो तो Yeah. या ट्विटर And I से also याद think आया। that's very Indian. Like हाँ Indian, that's a very Indian thing to do. या Your इट वाज nazar अ lag बेसिक jayegi. हाँ ट्विटर से याद आया, वी डिड अ रिसेंट ब्रांड कोलैबोरेशन विद ब्लू टोकाई ऑन इंस्टाग्राम अभी, और वो आपको जाके देखनी चाहिए। वी डिड इट फॉर प्राइड मंथ। इट्स अ ग्रेट पोस्ट रिटन बाय अदित। अदित हमारे नए इंटर्न है, काफी मचा रहे हैं, या and you might see his name in a lot of posts जहाँ पे he has curated or written those, and Hindol has also been supervising Adit। अदित हमारे इंटर्न के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं काफी सही मजा आ रहा है लाइक अभी लाइक जैसे आपको द बेयर वाली फीलिंग आती है विद द होल ऑफ चलचित्र राइट, हाँ सो ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल लाइक हमारी 3 लोगों की टीम है, 4 लोगों की इंक्लूडिंग नैने का ऑल्सो, बट लाइक एक वेरी माइक्रो लेवल पे मुझे भी वो फील आ रही है कि हाँ भाई चलो कुछ तो कुछ हो या रहा है, मैन, सो वो है। या एंड मतलब ऐसे टचवुड अभी एल्गोरिथम बाबा की हम पे कृपा बनी हुई है, तो लाइक थिंग्स आर गोइंग वेल, लाइक फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, सो अभी हम एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं विच इज या लाइक काउंटर प्रोडक्टिव टू द एल्गोरिथम, बट लाइक अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, या तो सो या हिंडोल आपकी तारीफें भी हो रही है। अनुराग कह रहे हैं हिंडोल इज द मोस्ट रिलेटेबल पर्सन ऑन द चैनल। सो अपन तीनों चलते हैं लाइक हिंडोल। हमारा स्ट्रगल नहीं ये नहीं यार, स्ट्रगल नहीं है. मुझसे रिलेट मत करो, खुश रहो जीवन में है ना मैं खुद अपने आप से रिलेट नहीं करता यार, आप लोग क्यों रिलेट करो बट या Yeah. Guys, quick Uh, question. If we are uh, wrapping up the stream, do we also reveal the book for the month? हाँ हाँ वी प्लीज कैन जाने से पहले ये भी हमारे ग्लैडिएटर है सत्यजीत। मेरे पास सुपर पावर है, मैं देख के मोस्टली बता पाता हूँ मैं हाँ कि कौन ग्लैडिएटर Yeah. गॉडफादर है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द मेंबरशिप आल्सो। गाइज अगर आप चलचित्र एक्चुअली सपोर्ट करना चाहते हो, सपोर्ट छोड़ो मतलब मत करो, अगर नहीं भी पसंद हम आपको ऐसी सर्विसेज देंगे ना, अगर हमारे कोई ग्लैडिएटर गॉडफादर देख रहे हैं वो बताएंगे। we have made these amazing clubs on WhatsApp, book club, movie club, music club, and you can get access to those by becoming our yearly member. आप चलचित्र की YouTube पे भी membership ले सकते हो, but we recommend to buy it on like a website because it's a more sustainable model for us, and plus it will be much cheaper for you also. So get our Godfather subscription there. We also do these monthly calls where we talk to our Godfathers. We have our Godfathers from all 7 continents, and सब आते हैं. And we recently started this new concept called Godfathers Cafe. It's a link where all our Godfathers can join, a Zoom link where they can join like any time of the day and like chill with each other. So कोई ऑस्ट्रेलिया से आके यूरोप के बंदे से बात कर रहा है, कोई उत्तराखंड से आके मुंबई के बंदे से बात कर रहे हैं, they watch NBA together, they play games together. So we have one of the greatest communities on the planet, and like you should definitely become a part of it. chalchitratalks.com पे जाइए and you'll know what to do. Great. Yes. Nice. 7 कॉन्टिनेंट किसी ने ऐसे लगे 7 ही होते हैं ना भाई? अंटार्कटिका भी आता है उसमें अंटार्कटिका भी बट आता हाँ है. अच्छा, हाँ Guys, तो एक है बात भाई, तो है। होगी है. हाँ हाँ Yeah? 100% है, Oh yeah, आप yeah, that ज्वाइन guy. करोगे तो हम मिलवाएंगे उनसे, Yeah. Yeah. Sorry. हाँ वानी। I was just apologizing. never apologize Yeah. Are you Yeah. guys talking about quitting car? क्या? Yeah. एक- No, Everywhere, guys. everywhere. No, guys. Oh, No. good one, good one. वानी जोक था वो। थर्ड गेस्ट रिवील कर दो। 282 लाइक्स हो गए। Guys, हाँ 300, please. 300 मान ये मानो दिल वानी। मांगे more. Yes. So बहुत back टाइम to बाद what was स्ट्रीम the कर। movie? Kargil?
There is 2000 a LOC there का is है, a हाँ. LOC. दिलजीत हमारे गॉडफादर है. He has given a super chat and written CCT membership ले डाला तो life जिंगा लाला. Coming straight from a godfather. He Yes. has been a godfather for more than a year and like amazing person. उत्तराखंड को मैंने shout out दिया और देखो दिलजीत की super chat आ गई. Very good. So you guys, अरे यार ये चारों की तारीफ guys. You guys are genuine. Yay. Thank you all. Thank you so much Sekat Saha. Thank you so much. कितने खुश हो गए भाई. यही Hindol validation is like, whatever. Hindol is like Relatable solo to दो them. भाई. Hindol hates it when their मैं तो attention isn't on ये him. Hindol को solo चाहिए भाई. Solo. नहीं मेरा ये था कि यार शिट जेन्युइन साइड नहीं दिखाना था, वो जो नहीं दिखाना था वो दिख गया. तो हम सब बनावटी लोग हैं यहाँ पे, कोई जेन्युइन नहीं है. But One हाँ, question आया है. Ajay is asking, have you guys like thought of like making? We have groups on Discord, but WhatsApp is more accessible. मेरे ना थोड़े फंडे वंडे क्लियर हुए हैं. मैं एक नाच समिट अटेंड करके आया हूँ. वहाँ पे हमें ऐसे प्रेजेंटेशंस दी थी कि आप लोगों को खेलना है तो ऐसे खेलो. Someone showed कि एक दिन में like WhatsApp कितने लोग यूज करते हैं और Discord कितने करते हैं. तो मतलब ऐसे मान लो कि 1000x का difference and like why how WhatsApp is the more sustainable like way to go about it. Yeah. And plus it's more intimate, it's faster, so yeah, like we have done the whole thing on WhatsApp. ठीक है. और बताओ क्या कहते हैं. Like Vaani, do you want to do the book reveal Yeah. for the next month? Okay. चलो वानी पे हम like वो डालेंगे. हाँ Light स्पॉटलाइट कर देते हैं. I think I'm okay without the spotlight. नहीं उनको एडिट भी करना है ना उस Oh. अरे नहीं वो अलग से वानी ने अलग से वीडियो भेज दिया उसका. अच्छा चलो ठीक है. But if ओ this comes out better, oof. वानी कोई नहीं the intelligent वाली. इट्स ओके. यस शेफ. I'm genuine. You're genuine, whatever. चलो 3 2 1. So, the book for the next month is something that I started reading this month only. I bought it a couple of months ago, and I got this because there were a few quotes that I had read, which were about loneliness, love. Loneliness wala part sabse zyada strike kiya because I'm 26 and I live alone. Age reveal. Sorry. But yeah, so it's about this girl who wants to find the cure to her mother's loneliness. And parallel story hai. There is this 14-year-old girl who wants to find a cure which will, make her mother feel less lonely. And parallelly, her mother is translating a novel. So अभी तक मैं पहुंची नहीं वहाँ पे, but I'm guessing कि novel का जो author है, he is the one who's leading the parallel story. He's an old guy, and it starts with him telling all of us that when they write my obituary tomorrow or the next day, it will say Leo Gursky is survived by an apartment full of shit. And I just loved the first line. This book had me from the very first line. And there were a few lines in between. Partly why I'm also picking this up is because iski thodi si writing is close to how I write. And I'm just like, if it works for everyone, I think I'll have validation कि मेरी writing अच्छी है. But overall, I'm picking this book up because it's a beautiful tale of वापस loneliness. से दिखा के नाम बताइए. It's And called the history of love. I hadn't Okay. called. I hadn't हाँ told मेरे को you. कोई टेंशन हो रही थी. हाँ yeah please. But this is the book. It's called The History of Love by Nicole Cross. Wait, sorry. मेरे sense of direction थोड़ा सा कम है, as you can see. But this is The History of Love by Nicole Cross. And I think it's one of the most beautiful books that I've read so far about loneliness, love, companionship, and also drama. Amazing. I'll be So survived by an guys, apartment full of shit. इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा. हमारे लिंक से लीजिए, affiliate लिंक से. And thank you so much for the amazing recommendation, Vaani. I need to point out in comments, Phoenix Bhai is gifting Phoenix Bhai has gifted 10 Chalchitra Talks memberships. भाई कुशल पे क्यों वेस्ट करी? कुशल ऑलरेडी गॉडफादर है. कुशल is a godfather. The same thing happened with me. मैं member बन गया था last month जब ये हुआ था but Nani Cole was gifted a membership. That's so sweet. Yeah. आपने कौन सी की है? गुड फेला की है, ग्लैडिएटर की है, गॉडफादर की है? याशी चौहान was gifted the membership. RK Kaur was gifted the membership. Scribble last page was gifted the membership.
Juhi Virmani was gifted the membership by Phoenix. The Neta, Wow. the Neta, the Neta was gifted the membership. Zenil Patel was gifted the membership. सबको नाम लेंगे. Devesh हाँ. Srivastava was gifted by Phoenix. Ashish K was gifted the membership by Phoenix. भाई मचा दिया. Phoenix OP हो जाए guys. जिसको भी membership चाहिए Phoenix OP कर दीजिए. Phoenix भाई आज like streak पे. And amazing stuff. And Uh, जो भी member बने, please drop a mail at vaibhav@chalchitratalks.com yes. and we will get you added everywhere. Yeah, we'll get you added everywhere, and maybe you can join our like Godfather's call, which is happening tomorrow at 12 p.m. This is great. जाने से पहले किसी की कोई miscellaneous recommendation है तो देख लो. I'm just seeing mine. Uh, I want to recommend a book. yeah. I'm sorry, I went back to a lot of books this time. It's called The Hidden Life of Trees. And if you're someone like me, restless, you would actually really appreciate this book because this book made me appreciate nature, but also how trees are in general and how plants are in general. It talks about how they communicate, how they exist, and how they kind of grow over years. And it really talks about living in a society, etc., etc. So if you're someone who's looking to take a pause or to slow down, pick up this book. There will be legit moments where you'll feel like, oh, these are the best time, and you will learn a lot from them, like Amazing. trees. Great. And like Hindol, Disha, any miscellaneous recommendations? हाँ, मैं स्पीड रन कर लेता हूँ. मेरे पास थी कुछ रिकमेंडेशन. हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट एक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ. इसका नाम है रिसेस थेरेपी. तो रिसेस Oh, थेरेपी इज बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स आंसर्ड बाय किड्स. तो बच्चों को जाके पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट काइंडनेस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस. और 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं जो yeah. अपने आंसर्स बताते हैं. वेरी लाइक होलसम, काफ़ी लाइक ऐसे दिल अच्छा करने वाला कंटेंट है. दैट इज़ वन. म्यूजिक रिकमेंडेशन है मेरे पास. म्यूजिक में और बोथ आर फ्रॉम द बेयर. टू आर्टिस्ट whom I discovered. One is Brian Eno. इनके दो ट्रैक्स थे Bro, welcome जो to the club, Brian Eno. हाँ, Next level पहुंच गए भाई. हाँ, Hindol, मेरे को Brian. काफी सही लगे ब्रायन इनो के. मैं दो ट्रैक्स मार्क करके रखे थे. वन, आप लोग ब्राइन इनो पे मेडिटेशन कर सकते हैं गाइस. ब्राइन हाँ, इनो का दुनिया का सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड म्यूजिक है. या या एंड लाइक वेरी नाइस मेलेडी. मतलब जितना अभी तक मैंने सुना है काफी सही था. एंड सेकंड वाज आरईएम. आरईएम एक बैंड है जिनका यस, रिसेस. हाँ, 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 स्ट्रेंज करेंसीज एक गाना है. उदय भाटिया had also written about this song की like they've used it very well in the bear. तो काफी सही गाना लगा मेरे को. वो है. एंड हाँ, एक और क्या था. हाँ, रामी मैंने देखा. अभी रामी सीजन 1 देखा मैंने. मेरे ब्रो. को हाँ, तो मेरे को ओवरऑल उतना अच्छा नहीं लगा. लाइक आई वाज वाचिंग इट फॉर या रिसर्च पर्पसेस. एंड बट एक एपिसोड है जो मैं सबको रेकमेंड करना चाहता हूँ. लाइक trigger warning, all kinds of warnings. But like it was the after that episode I started taking the show seriously. It is I think episode 4 or 5 of season 1, which is the 9/11 episode. And उसके बाद वो शो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये हो गया कि ओके अब कुछ हो रहा है इसमें. So again very dark, very like absurdly funny episode, but like do check it out. एंड So ब्रो जस्ट बी विद रामी फॉर अ व्हाइल. सीजन 2 इज इनसेन. हम्म. सीजन 2 में वो मूनलाइट वाला एक्टर भी है जिसको ऑस्कर मिला था. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, right, I saw bits of it. Yeah, so Yeah. you have to be with season 3 के लिए. I won't like Hmm. vouch for season 3. I didn't like season 3 इतना. Season 2 is something. It Right. peaks on season 2, so you have to watch Rami there. एंड ऑल्सो मैंने अभी जॉन विक का मैराथन किया था. जॉन विक 4 मेरे को काफी सही लगी. लाइक मैंने इस क्या पे बात कर रहे हो? मैंने देखी नहीं क्योंकि पूरी दुनिया बुराई कर रही है. अरे अब छोड़ो, दुनिया को साइड में रखो, देखो बहुत बढ़िया फिल्म है. एंड लाइक मैं तो घुस गया था पूरा. एंड एक मैंने ट्वीट भी किया था इस पे कि एक एक फ्रेम ना इतना बढ़िया उन लोगों ने किया. लाइक दे हैव एक्चुअली यूज द बजट दैट देव गॉट. इतना बढ़िया आर्ट है, इतना बढ़िया लाइटिंग है. सो मेरा ट्वीट वही था कि लाइक गाइस, सो दिस इज जस्ट एन एक्शन मूवी, सो लेट्स नॉट गो टू हार्ड विद द लाइटिंग एंड सेट्स. एंड द जॉन विक टीम सेज या, मतलब कियानू रीव्स का वो है टैगलाइन. वो कुछ भी चीज उसको पूछो वो बस या बोलता है पूरी फिल्म में. ये एंड देन you see like the kind of frames that they've done. बहुत बढ़िया shoot किया John Wick. I think currently action में no one is like doing as great as John Wick. तो legit है भाई John Wick. Okay, and there is a comment I want to point out. अनुराग का बहुत देर से आ रहा है. Except Hindol, why don't you guys watch or recommend regional movies? यार मैं देखता हूँ.
Hindol has like far better knowledge than me. So I keep also learning from him. Like I ask him about like what to watch, what not to watch. Hindol actually did a video where we were together, and he told me about the favorite Kamal Hassan films. Like the whole of we discussed Kamal Hassan's filmography. उसके बाद मैंने विक्रम देखी, उसके बाद मैंने नायकन देखी, Hmm. मैंने बचपन की जो देखी हुई थी कमल हसन वो Yeah. थी. Yeah. You But watched like Heram also. I watched Jairam also. Yeah. Yes, I watched Yeah. Jairam also. So Yeah. I watched 3 films after my video with and all. So ऐसे ही मैं धीरे धीरे सबका Yeah. देख रहा हूँ. अभी फहद फाजिल की कौन सी पिक्चर आई है कल? फहद फाजिल की एक ये मामन्नन करके मारी सेल्वराज एक डायरेक्टर है, तो कास्ट इश्यूज पे लाइक काफ़ी सही मूवीज बनाती हैं. तो कैसी है? उस तो मतलब आई हैवंट सीन इट बट लाइक हियरिंग वेरी गुड रिव्यूज. मतलब रौनक मैंगोटिल ने काफ़ी बढ़िया उसका ये दिखा था, लाइक इट फेल्ट वेरी पर्सनल जो उन्होंने रिव्यू लिखा था. सो लाइक आई रियली वांट टू सी इट. सो या और ये आज अदिति कौन सी पिक्चर बता रही थी? Which film is she going for tomorrow? सत्य प्रेम की कथा, वो भी मतलब सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लोग बोल रहे हैं. I've heard तो very good reviews of it. या So आई एम हियरिंग वेरी गुड थिंग्स. सो लाइक आई डू वांट टू सी कि भाई क्या किया है इन लोगों ने. What तो did you guys think of the new Karan Johar movie trailer? Silence, silence, silence. There is a very good Twitter thread on why SRK actually was the the best romantic hero of all time. क्योंकि एक ना hair flick है, like in हाँ. this like there is a frame where ना Alia is doing a hair पीछे, Ranveer is standing और रणवीर थोड़ा सा पीछे हो जाता है. एंड लाइक एवरीवन इज राइटिंग शाहरुख होता ना तो सारे बाल अपने मुंह पे आने देता. लाइक वो सूरज हुआ मध्यम जैसे करता है ना, कोई ऐसे मध्यम नहीं करा सकता. सो बेसिकली रणवीर was not totally into the moment with like आलिया, एंड लाइक वो पीछे हो गया यार, वो बाल फेंक रही है तुम पे और तुम पीछे हो गए. इट इज सच अ फाइन ऑब्जर्वेशन एक्चुअली. और आप बता सकते हैं रणवीर डजंट हैव इट इन हिम टू बी द नेक्स्ट सूरज हुआ I मध्यम. was watching some video today, yeah, and it had Hmm. Shah Rukh Khan, and वहाँ पे एक comment था like, it's a surprise how 3 generations of women still blush about like when Shah Rukh Khan is mentioned. Yes. And it's just nobody does romance like he does. Like Yeah. you want a Shah Rukh Khan in your life, everyone, and if you say no, Yeah. you're lying to yourself. Yeah, It's yeah, just yeah. No. Hindol and I also And need Shah Rukh Khan's analysis. हाँ हाँ अरे everyone. You want a Yeah. I've met man him like once and like he made me feel like मैं ही हूँ सब. मैं intern था उस time पे, exactly. but he was like कि यार Yeah. तू सबसे important आदमी है set पे. So That is like yeah. trick. Yeah, वो है मतलब उस मामले में is really really बट good. लाइक ओके, सो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है इस पे कि मतलब एज अ फिल्म मेकर, मतलब अब मैं हूँ नहीं फिल्म मेकर बट लाइक मैं आई वुड लाइक टू क्लेम दैट आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे थोड़ी सी इस चीज़ पे लाइक आपत्ति है कि everyone else has like better ऐसे फिल्म मेकिंग ओपिनियन वगैरह than the actual makers. कि मतलब सब पॉइंट कर रहे हैं कि अच्छा मैं बाल ऐसे ही कर लेता. then there was this other person जिसने लिखा था कि कॉस्ट्यूम गलत है. आई वुड हैव मेड कि उनको मैं ब्लैक और वाइट नहीं पहना था. द गर्ल आई वुड मेक कि वो सिर्फ कलर्स पहन रही हैं एंड देन लाइक ग्रेजुअली दे वेयर द सेम कलर. ये एक अच्छा वो था. एंड आई वाज लाइक यार सब फिल्म मेकर बन के बैठे तो मतलब ऑडियंस कौन है फिर. No, but तो इसमें बुराई क्या है? मतलब क्योंकि there are some great observations which नहीं, come out आई of such आई things. आई एग्री Yeah. दैट देयर इज ग्रेट ऑब्जर्वेशन वगैरह बट मतलब द थिंग इज मतलब आई डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट दिस. इट्स I जस्ट दैट think कि yeah. आई डोंट नो, मतलब हम ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो गए कि इट्स जस्ट वन There's सॉन्ग. nobody who's just sitting down या and taking it in and enjoying the process या or the हम duration of the. हमारा लाइक द फर्स्ट थिंग इज कि यार मेरे को ना इस पे एक वायरल ट्वीट डालना है, तो मैं गाना देख ही रहा हूँ उस नजरिए से कि मेरे को इसमें एक Yeah. फनी जोक निकालना है. पर तो पर हाँ but हिंडोल मैंने ऐसे नहीं देखा था. I love the some of the works of Karan Johar. हाँ But मैंने ये ट्वीट देखा and हाँ I'm like, and when you look at this snapshot, रणवीर की शक्ल actually ऐसे है. Yeah. Literally like you can see it in the snapshot, dude. And you're like, how this is crazy. मतलब it's वो सत्य है यार, वो फ्रेम कहीं कभी मतलब नहीं आपके देखो हाँ और फिर आप सूरज हुआ मध्यम का हाँ कोई भी फ्रेम, भाई वो ट्रिप कर रहा है भाई काजोल के yeah. बालों में, वो ट्रिप कर रहा है. आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट है जो मेंशन किया जाना चाहिए कि ऑल दी सॉन्ग्स सूरज व मध्यम, कभी अलविदा ना कहना क्या, जो तुम ही देखो ना, एंड ऑल दी हाँ. सॉन्ग्स, फारा खान वाज द कोरियोग्राफर Yeah. एंड Yes, शी yes, वाज yes. रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ दी सॉन्ग्स. मतलब काफी लोग वो भी कह रहे थे यार करण जो तुमने खुद बनाया है तुझे जो मध्यम, हाउ कैन यू फॉरगेट योर ओन स्किल Yes. सेट. तो वो No, है. no, you are absolutely right. मेरे को एंड याद है पता जब है
हाँ इस चीज पे लाइक आई हैड अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन कि मतलब आजकल की हिंदी फिल्मों में इन जनरल इंडियन सिनेमा में लिपसिंग गाने होते नहीं है, लिपसिंग गाने खत्म हो गए। लाइक इवन मनी रत्नम इज लाइक द मास्टर ऑफ सॉन्ग पिक्चराइजेशन एवर ऑल टाइम, उन्होंने लिपसिंग गाने करना बंद कर दिया। जो बैकग्राउंड में हम्म 40 सेकंड के लिए गाना आ रहा है फिर चला जा रहा है, उसमें भी डायलॉग इंटरकट हो रहा है। तो मतलब इंडियन सिनेमा हमारा मेन यही है कि यार हम गाने यूज करते थे, लाइक सॉन्ग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर नैरेटिव, हमने वही बंद कर दिया। सो आई थिंक लाइक इट्स अ वेरी existential phase for like all our previous generation filmmakers कि हम करें तो करें क्या, like they want to be ऐसे cool also but at the same time they don't consider like their own whatever if, works as uncool। तो एक हम्म वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है उस चीज से। मतलब आप हो यार, आपको आता है, जस्ट मेक इट विद कन्विक्शन। साउथ की फिल्में क्यों चलती है? क्योंकि लाइक दे नो दैट ओके वी Right. बिलीव इन दिस, वी आर गोइंग टू मेक दिस वर्क। तो वही है। मतलब अगेन सॉरी फॉर रैंट बट ये You know, ऐसे दिल पे बोझ था मेरे ये। हाँ। you're actually right. There was this article that I read a few months ago, and I think मैंने पहले भी came to discuss किया, but it was हाँ about how at least our generation and after that jitni bhi generation we're not able to appreciate hardcore Bollywood, and it's हाँ mostly because uh, initially when the movies came out they were based off of legends, stories that we've read about in हाँ mythology, etc. So jo Indian history, Indian mythology, it comes from the victory of good over evil, and we have this so most of the heroes, they turn out to be these mega super larger than life larger character। than life image sort of, and this, and as the influence started getting westernized, we kind of started looking at things that are more realistic. So हम्म perhaps a Shah Rukh Khan dancing to Chaiya Chaiya would have worked that उस era में, perhaps अब अगर कोई और करेगा तो it might not be received that well, and it's mostly हम्म because of how uh, and also like if I there is a phase in every person's life where we think the western cinema is way better than what we have here in the Hindi film हम्म industry or elsewhere, and because हमारा इतनी western influence हो जाती है, we kind of have the same expectations from Bollywood then, but we हम्म don't realize that the हमारी जो roots start हुई थी, they were actually, we like things that are larger than life. yeah There is a हम्म reason why we are such hardcore romantics deep down, because we want to see that on the screen. But yeah, इसीलिए वो I think हाँ थोड़ा सा crisis आ रहा है, existential ऐस crisis, yeah because Yeah. something like this, like Priyanka Chopra had said on Jimmy Kimmel or Jimmy Fallon, I think yeah, when La La Land became a success, hmm. और कुछ किसी एक फिल्म के लिए कहा था कि I'm so glad कि they are eventually like saying yes to like musicals like this जो हम हाँ पहले से करते हुए आ रहे हैं। yeah, Like I have this theory ना कि ओम शांति ओम did what La La Land did like ऐसे 10 years back ना। and अगर much हम better। ओम शांति ओम में देयर इज दिस सॉन्ग मैं अगर कहूँ जिसमें वो ऐसे बॉल डांस वगैरह oh, करते हैं, and yeah, if you compare it to La La Land, there are parts of that song which are like better than like matlab cinematically which are at par with La La Land. Like I have been working on this theory for some years now. Om yeah, Shanti the Om, like they हाँ were the not fucking yeah yeah. हाँ so sorry yeah, हाँ the fundamental difference why like Bollywood use of music in Bollywood excels anything that is done in Hollywood is plot versus character। Yeah. हॉलीवुड मूवीज में जब गाने होते हैं तो वो सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हाँ yeah, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, वो ऐसा किया वो हुआ ये है। हम कैरेक्टर मोटिवेशन एक्सप्लेन करते हैं कि उस समय उस कैरेक्टर का क्या चल रहा है दिमाग में। छैया छैया अगर Hmm. आप ध्यान आप गए, आपका God. गया छैया 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 अगर आप ध्यान से सुनो, No, 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 you're not there, Hindol. हिंडोल हमारे साथ अभी जुड़ते ही होंगे गाइस, या धन्यवाद। हाँ Yeah, छैया छैया हाँ सो छैया छैया के अगर लिरिक्स ध्यान से सुनो, इट इज अबाउट सूफिज्म, वो पूरा सूफी आइडिया ऑफ लव है। yeah. और इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन whom you have seen only for 5 minutes on the screen। तो हम वैसे यूज करते थे गाने। अभी मतलब आई डोंट अभी नो। it's become a filler, like या it's like they're fine, उन्हें बस fit करना है, it doesn't हाँ fit the frame that we're watching, या and या then that's why you get distracted from, sorry, या गुड दैट्स वेयर I think that's why you get distracted from the storyline, like oh is it even important now, it becomes a break that you never asked for, that advertisement जो बीच में या YouTube ad आ जाती है, या and you're just like, dude, like ठीक है, just it's no longer a part of the narrative, and I think that's the only thing that's missing. Having said, हाँ या हैविंग सेड दैट, लाइक आप मेरे लिए बोल रहे थे वानी ये, या आप
कुछ ऐड करना चाहते हो वहाँ पे? Having said that though. Having said that, I genuinely just, if you go to the actual really good movies that we've had in the recent past and the ones that have come with some great lineup of music, you would know why it is very important. Hmm. And it just becomes a disappointment that when that doesn't translate in the story. Yeah. Like I even have from a a pure commerce, नहीं इस चीज कर पे दो. मेरा बहुत opinion है. Yeah, But please, even please. like from a pure commerce background, मतलब financially अगर हम देखें, I think of the 90s, like what was the main like marketing tool for any movie? The soundtrack. पहले Yeah. एल्बम आता था, 3 महीने चलता था, लोग घिस घिस के सुन लेते थे. Then they would be like, okay, now I want to see how they've picturized it in the movie. Yeah, वो पूरा प्रोसेस उड़ गया है. अब हम देखते हैं गाने, हम सुनते नहीं है गाने. true. तो वो पता You नहीं. know, yeah, हाँ. I surprisingly, this is like the last thought I will share ever. I'm so sorry. नहीं नहीं But अच्छा है भाई, अच्छा है, सब इतने फ्लो में आज. This is beautiful. but मेरे आंसू yeah, निकलने वाले हैं. aw. Uh, But there was this short or reel that popped up in my phone this morning, and it was um, Sonu Nigam and a few musicians discussing a process, and they were talking about the movie Band Baja Barat and the song "Main Aime Aime Lut Gaya," and the director was new, and it was the launch of. Ranveer Singh and also Anushka Sharma was also a new talent at that time. And they were talking about how the director had said, ki, okay, I don't want the Eme Gana in it. And it was mostly because he did not want to take a risk. But then now, when you look at the filmography, I think that song did, like, it got numbers for Band Baja Bharat. I remember being excited for the movie only because of that song, because Yeah. it was so quirky and nice. So yeah, I don't think movies do that anymore. Songs do that for movies anymore. got it. That's So मैं ये बोलने वाला था, जब छैया छैया और सूफिज्म मेंशन किया था, I did a poll in the music club अभी कुछ टाइम पहले, and I'll ask everyone here also and in the chats, which is a better song? सबको बताना है guys. ख्वाजा मेरे ख्वाजा या कुन फाया कुन? You can only choose one. Disha, ख्वाजा मेरे ख्वाजा या कुन फाया कुन? Choose one song. ख्वाजा मेरे ख्वाजा. Hey, mine too. Vaani, um I like both the songs, but I'll go with Kun Faya Kun. Hindol. Mostly, yeah. Difficult, very difficult. कौन सा है कौन? मतलब I'm not thinking. Uh, you know, I I think searched. Kun Faya Kun. One point, Yeah. na. हाँ. I searched for the views on both the songs. Uh, ख्वाजा मेरा ख्वाजा has some 25 million. मतलब मैं बहुत गलत बता सकता हूँ numbers. Like 25 million views. Kun Faya Kun has 250 million views. Yeah. I'll tell you. 10x का difference है. Yeah, I think it's because Kun Faya Kun is about a journey of struggle. Like, and Khwaja Mere Khwaja is like mostly like something that's, it comes out of endearment. Okay, Like, I Khwaja have Mere Khwaja, I Dil would Mein like to change Samaja. my answer. Oh, shit. My answer is Right. Arzia. Arzia from Delhi 6. Archana is a beautiful song. Yeah. I like Uh, how, like once you start reading Urdu poetry and of course you start taking notice. I just love it when they come. So Ranjana has this line where Dhanush says ki, whatever, she was praying but ऐसा लग रहा था कि मेरी दुआ हमारी कबूल दुआ हो गई. हमारी कबूल हो रही थी. And I just love it when they do that. They compare something so pure as, worshipping God, the one almighty, that the person you turn to when you lose everything or when you want to thank him for everything that you have. And they compare it to love and loving a mortal being. And I just kind of, वो मेरा अपना ही trip चल रहा होता है whenever they do that in lyrics or ever in poetry. So just love it when that happens. वही यार, प्यार में बर्बाद नहीं हो रहे लोग आजकल, इसलिए फिल्में नहीं बन रही अच्छी. सही बात है. Yeah. दिल नहीं You know, टुटवाए when मैंने. Hindol had originally set his point, एक तो यार intersect करना इतना मुश्किल हो जाता है because I'm constantly worried कि I'm gonna speak over someone, तो मैं पूरा भूल गई. And फिर अभी मेरे को याद आया मैं क्या बोलने वाली थी. हाँ. I have been getting this feeling that the audience is getting more intelligent, and I'm very happy about that. But also, like, the audience has picked certain favorites, and there are certain people that are they will be hated on no matter what. हाँ. And Alia and Ranveer are part of that group. So isliye people went in with that agenda that we want to be highly critical of this song. So they didn't even give it a shot, is what I believe. I mean, it is bad also,
but also they didn't want to give it a shot. You And know if you what see वो yeah. जो Netflix की नई there's a show that's coming with Dot and the other kid, Archie's. Yeah. Archie's. Archie's, yeah. All the comments are flooded with hate. Hmm. You So know there's what? no question Yeah. of whether it's going to be a good show or not. Vani is very excited today. I'm so sorry I've cut you twice now. Yeah, but like I just think that we are going to lose out on a lot of good content simply because of our bias. Hmm. Yeah, and Vani. I also think that sometimes happens because we're taking ourselves too seriously. And so for example, the like I know, like I sometimes get so conscious of the cheat shows that I watch, or cheat movies that I watch, or cheat books that I read, because I'm just critical of how people will think Hmm. of me. And we've all had that phase where we thought, okay, this is not something that's cool to watch. Hmm. But Uh-huh. in hindsight, it's actually तुम्हें नहीं सोचना है, but it's very fun. You won't Hmm. perhaps come back with a life lesson, or your life won't change, and you won't, but it'll just be something that you need in that moment. And I think as an audience, a lot of us, like at least the majority of us, have just started taking ourselves too seriously. We can't sit and enjoy, like a kabhi khushi gum won't, like a lot of people won't enjoy it. हाँ नहीं एंड ऑल्सो आई थिंक एक काउंटर कल्चर वाली चीज अभी आ गई है कि मान लो कोई एक ऐसी चीज थी जिसपे सबने गालियां दी थी 20 साल पहले नाउ एवरीवन हैज दिस टेंडेंसी कि दे वुड ब्रिंग दैट थिंग बैक एंड से किया तुमने अप्रिशिएट नहीं किया तुमको कदर नहीं है अभी ये पता है 30 मार खान की फॉलोइंग है ट्विटर पे लाइक पीपल कोट 30 मार खान ऑन अ लेजिट बेसिस एंड पीपल से दैट ओ दिस इज अ गुड कॉमेडी मूवी वगैरह एंड ये मैंने अभी ट्विटर पे लाइक एक्सपेरिमेंट किया था लाइक ऑल ऐसे मतलब मैंने I deliberately picked movies to like ऐसे quote which I knew कि okay थोड़ा एक nostalgia एक element है 30 मार खान था अगेन ढूंढते रह जाओगे जो कुणाल के मुंह वाले एपिसोड में भी बात हुई थी एंड एवरीवन वाज लाइक ब्रो ये तो बहुत अच्छी मूवी थी तो एक वो वाली चीज भी काम कर रही है कि लाइक एंटी मेन स्ट्रीम जो भी है पीपल आर लाइक हाँ एंटी मेन स्ट्रीम होना ये बहुत तो ट्रू है, आई एग्री विद यू, Yeah. ये काफी होता है, या एंड गाइज 210 लोग अभी भी देख रहे हैं, काम धंधा किसी के पास ऐसे लगता नहीं है सब हमें, लेकिन अब निकलना होगा कुछ टाइम में, हाँ एंड आई हैवंट सीन 30 मार खान, थोड़ी बुराइयां हो रही है उसकी I कमेंट्स में, even शुड haven't. आई It वॉच? is really I've bad. seen Sheila Giri, yeah. 30 Khan has the best 2 minutes of entire cinema history जहाँ रघु पे राजीव नहीं नहीं कोमल नाहटा Puran. इज इन दैट मूवी तो उसमें बेसिकली एक वो होता है कि एक फेक मूवी बना रहे होते हैं और फिर वो मूवी का प्रीमियर होता है एंड में और वो मूवी पूरा दिखाते हैं थिएटर में फिर कोमल नाहटा आता है 2 मिनट के लिए बोलता है वाह क्या फिल्म है ये तो फ्रेंच सिनेमा है इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए इट्स ये माय आपने फेवरेट क्लिप, ये क्लिप हाँ मैंने देखी है क्लिप yeah, but this is amazing guys, like always lovely to do the best of streams, and you'll see all four of us on the best of streams a lot more, and बहुत मजा आया आज, and आज सबका internet smoothly चला, and like all the great Yeah. things happened, so this was Apart from the nice. glitches at the beginning. Yeah, and Disha के internet issues नहीं हुए वगैरह, and like it was amazing. Okay, मतलब बहुत बढ़िया हुआ. So any last pointers, कोई कुछ कहना चाहता है दिशा? I am excited for the next stream. I really enjoyed this stream, I Yeah, think, yeah, compared yeah. to the previous ones. Great, great. This is amazing. And yes, जुलाई में आप बेस्ट ऑफ जुलाई में आइए एंड देखिए कि कवर फोटो पे थंबनेल पे ओपनहाइमर होता है या बाबी, है ना? एंड हिंडोल वानी, डू यू गाइस वांट टू ऐड एनीथिंग? बहुत क्रेजी गेस्ट एपिसोड्स आने वाले हैं एंड नॉट जस्ट ऑन चलचित्र ऑल्सो ऑन एसएलएस सेकंड लास्ट सपर पे यस, एक बहुत ही दिमाग खोलने वाला वीडियो आने वाला दिमाग है खोलने वाला एपिसोड, विच आई इज थिंक वो हमें, या इट्स विद देवैया Devaya Bopanna. He या is the guy who has written all the cred ads, या and he was the head writer of AIB, a या person I really, really admire, and I'd been wanting to get him on the channel for a very long time. So just level पे बातें हुई हैं उनसे, because when we do stuff outside of Chalchitra, we have more freedom, and we capitalized on that freedom. So मजा आने वाला है आपको. या So वो है subscribe to Second Last हाँ Supper. Yeah. देयर इज Vaibhav did his first round table तो वो भी आने Yes. वाला है It's And- releasing tomorrow. We did a roundtable
विद नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स और बाफ्टा के कुछ टैलेंट्स है जो बाफ्टा का जो ब्रेक थ्रू प्रोग्राम होता है उसमें सेलेक्ट हुए थे, एंड देर आर सम अमेजिंग फिल्म मेकर्स इन इट। देर इज Pratik Vats, who has made E Bollywood. There is Aarti Kadav, who has made Cargo. There are amazing musicians in it. We have the head of Netflix India also in it, Monica Shergill, and Sumukhi Suresh is also there in it. Yeah. So, Ari, how did I not talk about Pushpavali? Holy Yeah. shit! Pushpavali, guys, is something. And Pushpavali, Disha, Vaani, have you guys seen Pushpavali? No. Pushpavali is the greatest show ever made on stalking. एंड मेरे को आधा तो पुष्पावली अप्रिशिएट राहुल देसाई के रिव्यू के बात करना है, बिकॉज मेरे को लगा है कि ऐसे दिखाया एक ऑब्सेस्ड बंदी है, बट it's about like how paranoid someone can be with their stalking, and like Sumukhi has played that role herself and created that show where she has just showcased the life of a stalker and a serial stalker, Yeah. कि कोई स्टॉकिंग के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकता है। एंड इसकी टोन बहुत ही कॉमेडी है वाली है, लाइट है, बट इट्स अ वेरी वेरी डार्क शो। Yeah. आई वुड हाईली रिकमेंड। मैं अभी सीजन 2 पे हूँ, मेरा सीजन 2 खत्म नहीं हुआ। आई एम टेलिंग यू, यू गाइस नीड टू रीड व्हाट दिस राहुल हैज रिटन अबाउट इट, एंड आल्सो Disha, Vaani, you guys should definitely check it out. Pushpavali. Mhm. And someone just became a member, Shubham. Sponsored क्या रहा है, हमारे को ही बता रहे हो स्पॉन्सर? Why is it sponsored written? नहीं नहीं यार, Yeah, always yes, yeah, sponsorship. yeah. हाँ. And And और thank you क्या, so, yeah, हाँ, बस follow us यही। on Instagram, follow us on Twitter, follow us on LinkedIn, और हाँ अगर आप TikTok. हमें इंस्टा पे फॉलो करोगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस वील क्रॉस 1 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इन अगस्त। Yes. By हाँ. August, है ना? And like do check out the book of the month, do subscribe the made of earth cups that like all of us have, बहुत प्यारे cups हैं ये। And yeah, keep following हाँ. Chalchitra And Talk. also one last recommendation, Insta पे there is a new series of reels that is going on, which Yes, is Vani's poetry recitation combined with Yash's editing skills. तो काफी एक अच्छी सीरीज चल रही है वो. So अभी yes, we did one on Piku, अभी कुछ कुछ it बहुत it has मूवीज का. more than 1 lakh likes and 1 Yeah, million views. 1 million views. तो वो है. एंड And पथिक के भी वीडियोस है, बहुत हाँ. प्यारे वीडियोस Yeah. है ये, एंड लाइक दिस इज अ फॉर्मेट। Yeah. वानी मस्त नेक्स्ट एक अपना वो बना लो, इसका हाँ. लॉट बना लो, Hey, बहुत I'll do a Marathi poem. Oh, go for it. Go for it. ओ ब्रो, बहुत कूल होगा, Yeah. बहुत कूल I just होगा। know one, but I really like that one, so I can do Yes. that. लेट्स डू दिस, लेट्स डू Yeah. दिस, लेट्स डू दिस। So ग्रेट। yeah. So this is amazing, guys. We'll see you and take care. Bye everyone. Bye. Bye.